Okay, so starting with the event, a very pleasant evening to one and all present here, and thank you for joining us today. I'm your today's host Vaishnavi Kutte, and I'm from third year Computer Science Department. And I am your co-host Prathamesh Parit from second year Artificial Intelligence and Data Science Department. And on behalf of ACM Student Chapter and CSI, I warmly welcome you all for today's event, Placement Talks. Now, Vaishnavi, would you explain our audience a little bit about what's going to happen today? Yeah, sure. So ACM Student Chapter, along with the CSI, has come up with an initiative that will boost your placement preparation in a very fantastic manner. So I'm sure every one of you has heard the phrase experience is the greatest teacher, right? So here we are to prove the same thing. We have here with us some of our finest students of DYPIMR who are going to guide us today and answer all our doubts regarding the same. Yeah, and we are glad to have our guest speakers who are pass outs of DYPIMR itself and have been placed into well-known companies like Aman Mulani, who is a DevOps engineer, and Neha Kare, a software developer at Crest Data Systems. Pratima Bakshi, a software developer at American Express. Sparsh Goyal, an associate software engineer at Zorient Solutions Private Limited. Divyansh Moria, software engineer at SAS R&D. And especially for you guys, especially for our machine learning and data science enthusiasts, we have Karthik Karande, AI use case specialist himself. Can you believe that, Vaishnavi? Yeah, it's like very amazing to hear. Also, guys, as there are here we are today, and they are giving the precious time to us, our speakers, from the very busy schedule. Let's make this beautiful evening even more interesting and memorable. So, are you guys all ready? Should we start the event? Can I have your answers in the chat box? Like, I would feel better. Are you all comfortable? Yeah, I just can't wait any longer. Let's just proceed. Yes, I'm very excited for this event too. So let's just proceed. Okay. So starting with Aman Mulane, who is a DevOps engineer at Crest Data Systems and previous year president of Rotaract Club of DYPIMR. So there's a famous saying goes, expert in everything was once a beginner. So I would like to know from Aman that how did you start your journey as a programmer? And what is your experience about your placement, like how you cleared your placement rounds? Yeah, sure. Good evening, everyone. I hope that I'm audible. Yes, I'm you are audible. audible. Right. So thank you for the warm welcome, Vaishnavi and Prathamesh. And first of all, I'm not a pass out. I'm still a student in fourth year. So it feels very odd when you say that we are pass outs. Like we are still students. Come on. So directly coming to your question, my programming journey has been coming long since 8th standard. I belong to ICSE. So in ICSE, we have Java from 8th standard itself, and in 12th standard itself, we have Java as well. So that's where we started doing programming. And to start to talk about programming experience, I remember it very well. One of my friends, Sarang, he's currently in IIT Delhi. We were sitting in our computer lab, and we were just playing around. We didn't know anything about loops and stuff. So what happened was he just created an infinite loop on my PC, right? He just removed the condition check. And he told me I done something which you cannot undo. So I was like, yes, I don't know how to do that. And that guy was really talented. He cracked IIT, like JW and in JW Advanced, and is currently doing R&D in IIT Delhi. So that's where I actually got interested in programming, and then we tried to catch up to him, but his knowledge was definitely way ahead than ours. But that's where I get programming as an interest. And talking about our journey about placements, to be honest, my placements were pretty simple. Like I actually didn't prepare anything for the placements. I remember very well. I had a call with Neha that should we give the interview or not at the first place. So she was like, just dekhe dekhte kya hota hai. So so that's where and the interview went pretty smooth. So I didn't have anything as such to share about my interview because I didn't study for it and it went well for me. So not bragging about it, but that is how it was. Okay, cool. Nice. Indeed, you shared very great experience. So one more question for you that great achievers are continuous learners. So what are your thoughts on that question?
Absolutely. I completely agree with it. And one more thing that I would like to see from my side, like I've not done anything uh, great to be called an achiever and stuff. I still believe that it's a continuous path and I'm trying to learn things and stuff. But one thing which I'd like to share with all is that, don't try to be good at everything. You should be versatile, right? But on the other hand, you should be a master of one. So if I see right now what is happening is even though you're good at development, you're trying to go into CP and stuff, talking about CS graduates, right? So have knowledge about it. It's important, but that doesn't mean that you be mediocre at everything you're trying to do. Like you are not specialist of development. You're neither a specialist of DSA. If DSA is not for you, just learn the basic concepts, right? And that will help. But rather than being, mediocre at every level, try to master what you are good at, find out what you are good at, and that is what actually means continuous learning. It does not mean that you learn new concepts and be mediocre at them. You just have knowledge of all, but you are master at one. That is what continuous learning means for. That is your yesterday status also, I think, right? Yesterday, after talking with Pratima, I realized that. So I thought that let's just put it out. Nice thought, Aman. Thank you. Okay, and I feel like you are a good motivator. Like most of the people shared their experience to me that he's a good mentor. So, what you have to say about it? Like, Uh, to be very honest, there's where my actual interest lies, right? I have tried doing a lot of things, but at the end of the day, I get my satisfaction after trying to reach out to people, talking with them, and stuff. So I feel my ikigai is somewhere lies in that area where able to help people and able to teach them or like more of a mentor or teacher types of role is what I prefer to. And on the other hand, coding is my passion, right? I'm a developer by passion, although not not a CP by passion, right? Trying to learn things that, but that's where I realized that DSA is not actually meant for me in the niche basis. I just need to know the concepts. I need to be versatile, but on the other hand, but in the race of being versatile in everything, I am being mediocre at all. So I need to be good, best at what I am best at. I need to create my own yes, way forward. So that's right. pretty much it. Okay, nice experience you shared. I liked it a lot. So going forward, our next speaker is Pratima Bakshi, who is a software developer at American Express. Like wow, and she has received a package of 18 lakhs. Like so now I would like to know how was your journey of getting placed in American Express. Like we all are shocked and feeling very proud also that you are from our college and that's it. I would like to listen to you. You share your experience regarding the same. I Hello, think your Pratima. voice is very low, Pratima. Yes, Yeah, you are not completely audible. Just check your mic and yeah. Can you rejoin? No, Pratima, your voice is quite low. yeah, just do one thing. Just unplug your mic and use the Yeah. laptop mic default. It will work. No, no, just remove your mic and talk with the laptop default speaker. Also, guys, I request you all to rename yourself. There are many people who have not used the proper name, so just rename yourself. Yeah, Pratima. No, you are not audible. Yeah, Meanwhile, just you're just continue with Neha. After Neha, we will continue with Pratima. We'll then check yeah. your connection. Vaishnavi, can Okay, we? okay. Yeah. So I'd love to hear about Sparsh Bhaiya. So Sparsh Bhaiya, can you introduce yourself and can you enlighten us on how one should prepare during our placements? Like how often one should invest their time learning new skills beside college work? Yeah, hi everyone, good evening.
So my name is Parash Goyal, and I am a pass out of DYP IMR. I'm a 2021 pass out. So basically, I am from the COVID batch. So currently, I'm working with Zorent as an associate software engineer. And to answer your question, I feel it's very important to learn some new skills apart from the academia for getting a good role in the industry. Like working in the industry for the past 6 months, I have observed that the theoretical knowledge which we learn in the academia or in the syllabus is not sufficient to deliver as per the expectations of the industry. Like I remember in my time, I had participated in a lot of hackathons in the third year and the final year of my engineering. And that helped me a lot to speak during the interviews. Like we were a batch of around 150 students, and everyone would be coming and saying that I've learned this language, I have learned this language, and I've done this project. But you should add something which makes a difference for the interview as well and for your persona as well. So I had a lot of hackathons to speak about. Also, I had participated in the clubs, various clubs of the college, just like ACM is there, CSI is there, Rotract, ComSci is one of them. So these also help you to talk about the leadership roles, because coming in the industry, it's not just delivering what you are expected to, but it's also about the teamwork which you bring in. It's also performing in the team and helping them to cope up with the pressure, because in the industry it's like you have to deliver a new product in 1 month or 2 months, so every 2 months you have a release in the production. So it's a continuous learning, as Aman said, and it's not just about the versatility, but it's also about being masters in some of them, not only just one technology but multiple technologies, because you can't just rely on one technology and deliver. Talking about front end or back end, there are multiple technologies. Like front end, you have React, Angular, and in back end, you have Java, you have Python. So a lot of these technologies are covered in the college syllabus, but React technologies like React, Angular, and some other grid branching strategies are not discussed in the college syllabus. So it's very important for the students to learn these technologies outside the syllabus, outside the classroom. That's what I feel. Yeah. Thank you, Sparsh Bhaiya. And I had one question like, how was your placement experience? Like, how many companies did you apply for? Right. So I am currently placed in Zorent, and that was the third company which I had visited the college. And during our time, it was very difficult for us because we were from the COVID batch, and we were told that not many companies will be visiting the college due to obvious reasons. So I had offers from Capgemini, I had offers from TCS, but I went ahead with Zorent. Zorent is an MNC, but it's a small company. And I always prefer to be working with a small company because you get to learn a lot. Like if you work for Capgemini or TCS, the exposure which you will get is limited in terms of your growth. But if you're working for a startup, or let's say you're working for a small company, so you get to try a lot of things. You get hands-on experience on many different technologies, and that definitely adds up to your growth. And also, I would like to share a fun fact that from Zorient, there was no selection for our previous batch, like for our seniors. So it also said that it's the toughest interview for Zorient in the whole industry. So that was one thing which I'm really proud of, and really proud for DYP IMR as well, because from our batch, we were 11 students which are selected. And for the current batch also, I see there are around 15 offers. So if we were not selected from our batch, then definitely these offers would not have been placed for the other batches as well. So yeah, I Okay, guess Splash. Tanmay can definitely shed light on this point because he is also placed in Zorient. So Yeah, yeah. and my experience was same. Ki I also felt ki yeah, they had this genuineness in their test. So like say ना कि अभी online हो रहा है तो I'm sorry. We say ना कि अभी online हो रहा है तो copy करके हो जाएगा, but that was not the case. You need to have that thorough knowledge about it. So yeah, moving on with the event. Vaishnavi and Prathamesh, over to you guys. Okay, Sparsh, I have one question for you, that how you manage your time. Like you guys have all so many kind of stuffs to do. So how you manage your time? How you take
time to do another activities which you want to do Yeah. So apart nowadays, from studies, right. technologies? So nowadays, students are attending classes from home, and I feel that it's the best time to invest in other technologies because you can always skip classes and you can always keep the lecture on and go ahead. So it's not recommended, but I think that apart from the theoretical knowledge which is gained from the lectures, it's very important to learn new technology. So even after the lectures, we had an ample amount of time because when the college was physically open, we had lectures from 9 in the morning to like 5 in the evening. But now the lectures have been reduced to like 1 in the afternoon. So you have an ample amount of time to devote yourself to other technologies or other skills basically. So there are different platforms which you can utilize, and Hacker Earth is one of them, where you get to know about different challenges and different hackathons coming about. And you can every day spend 1 hour or two, let's say, to explore these and participate. I would recommend everyone to at least participate, and winning and losing is a different thing. But if you participate, you get to know a lot of things and you get to know the delivery. Like you know the theoretical concepts, you know the language. But when you build something from scratch, so that definitely adds to the happiness and also to your knowledge. Yes, sure. We'll definitely keep these points in mind. Yeah. Thank you, Spesh. Pratima is available now. Am I audible now? Yeah. Am I audible now? Yes, yes, you're audible. Okay. So coming to Pratima Bakshe, indeed a wonderful experience you have shared, Sparsh. And now coming to Pratima Didi, who is a software developer at American Express and received a package of 18 lakhs from, it is, I think, from off campus. But still, I would like to know how was your journey of getting placed in American Express? Like it's a brand name, and we are so excited to hear that thing from you. Okay. So my journey has been a complete roller coaster ride, like talking about the hit of from the hit of the COVID period up till now, it has been a complete roller coaster ride because it has turned out to be a literally golden moment, golden days for me. This COVID period has turned out to be just amazing for me because actually I didn't know a lot of stuff about this stream. I was like, I was good at theoretical concepts only. I wouldn't say that I was very good at coding, but I developed the skill. I developed passion for it, and I feel like I am now very much keen about this skill of mine, and I'm still in my learning phase. I won't say that I'm completely pro at it, but I'm still in my learning phase in this. And talking about my journey, initially, I'll tell you. जब मैं घर पे आई थी, actually, I started with my like everybody was doing this different technologies like web development, Android development, etc. तो तब मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए because मैं सच में बताती हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता था. I was like very कुछ भी नहीं आता था मुझे. यार हम क्या करें फिर कुछ भी नहीं आता था मुझे. तो मतलब theoretically I felt I was stronger, बट प्रैक्टिकली इतना अच्छा नॉलेज नहीं था मुझे जैसे मेरे मतलब अमन नेहा इन सबके सामने में कुछ नहीं थी, लिटरली नथिंग. फिर उसके बाद मैंने स्क्रैच से एकदम शुरू किया, डेवलपमेंट किया 4 to 5 months आई डिड डेवलपमेंट. फिर उसके बाद जब मेरा मन उठ गया तो फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो उसके टाइम पे मैंने काफी ज्यादा कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा, लाइक COA एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें पढ़ी. फिर उसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब ये मोमेंट ऑफ ट्रुथ है, मुझे कोडिंग फाइनली फेस करनी पड़ेगी, मुझे शुरू करनी पड़ेगी कोडिंग. तो फिर मैंने कोडिंग शुरू की बिकॉज मेरे 11th-12th में कोडिंग थी एंड आई हैड अ वेरी टफ पीरियड एट दैट टाइम. बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था उन डेज में मैंने. मतलब ठीक है, तब तो इतना ज्यादा होता नहीं है कि मतलब खाली पेपर ही देना है, पास करना है तो ठीक है. बट फिर फाइनली मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए, नाउ आई शुड स्टार्ट. तो फिर मैंने स्टार्ट किया. टॉकिंग अबाउट इनिशियल डेज, बहुत ज्यादा टफ था. आई वुड लिटरली स्क्रिबल अप माई सारी नोटबुक मतलब भर देती थी और लॉजिक बनता नहीं था मुझसे. पूरा दिन लगी रहती थी मैं, नहीं बनेगा लॉजिक, बट एट द एंड ऑफ द डे फिर मेरे में वो आ जाता था कि नहीं, मुझे कल दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करना है. आई वुडंट स्टॉप हियर.
तो आई वुड से पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी आर द टू फैक्टर्स जिन्होंने मतलब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है यहाँ तक आने में. अदरवाइज अगर मैं उसी वक्त गिव अप कर देती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती. इट हैज बीन रियली टफ. मतलब जितना भी मैंने अभी तक गो थ्रू किया, बहुत ज्यादा टफ टाइम्स है. मतलब कभी कभार मैं ऐसे हो जाती थी इतने डिमोटिवेट, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं यहाँ पे करूंगी क्या. तो फाइनली फिर जब 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, फाइनली 10 to 15 days के बाद बनने लगा लॉजिक. ठीक है. एंड आई वाज नॉट वेरी स्पेसिफिक कि मतलब मुझे ये ध्यान नहीं था कि मुझे ज्यादा क्वेश्चंस करने, बट ये ध्यान था कि लॉजिक इज इम्पोर्टेंट, मार्किंग अप इज नॉट इम्पोर्टेंट. सच बताओ तो अगर अभी भी मतलब मैं लोगों से बात करती हूँ जैसे कि कोड देख ले क्या डायरेक्टली, तो कोड देखना इज नॉट द सोल्यूशन. एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू बी गुड विद योर लॉजिस्टिक्स, सॉरी, गुड विद योर लॉजिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. वो जितना डेवलप करोगे वो ही एट द एंड ऑफ द डे काम आने वाला है. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सेम प्रॉब्लम आपको हर एक इंटरव्यू में मिलने वाली है, फिर आपकी ऑनलाइन असेसमेंट में सेम प्रॉब्लम्स आपको दिखने वाली है. ओके, सो देयर इज अ वैरायटी. आपको रियल लाइफ सिनेरियोज पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आ सकती है. लाइक in my final round, talking about my final जब मेरा ऑनलाइन असेसमेंट था अमेरिकन का, एक अमेरिकन एक्सप्रेस का, आई स्टिल रिमेम्बर द प्रॉब्लम वाज रियली रियली डिफिकल्ट. एंड मुझे उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था. एंड द टाइम पीरियड वाज लाइक 2.5 आवर्स था. 3 क्वेश्चन थे, 2.5 आवर्स थे. बाकी 2 क्वेश्चन वो लाइक लीड कोड के मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन होते हैं, वो ठीक थे. लेकिन जो लास्ट वाला था वाज रियली रियली टफ. ठीक है, तो वो बनना वाज लाइक मेरे लिए इम्पॉसिबल था. फिर भी मैं लगी रही, मेरे चलो 5 मिनट बचे हैं, 15 मिनट बचे, 10 मिनट बचे, एंड मतलब लिटरली 5 मिनट्स बचे थे और वो सारे टेस्ट केस रन हो गए. एंड वो इतनी सेटिस्फैक्शन मिली कि चलो कुछ तो हुआ फाइनली. तो आई वुड से कि कंसिस्टेंट रहो जर्नी में, पेशेंट रहो. ये मत करना कि अगर नहीं हो रहा है तो सीधा ये देखती हूँ, कोड देखती हूँ और कर लेती हूँ, लिख देती हूँ. ठीक है, तो दैट्स इट. Okay, indeed, a really nice experience you shared. I really expected a lot of things from you. So thank you for your experience. What about how you got your job from American Express? Like how they Okay. approached you? They didn't approach me, even I didn't approach them, because हम दोनों में से किसी को नहीं पता था. सॉरी, कंपनी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और उनका मतलब चलते रहते हैं जैसे टेक गीक पे, हैकर पे काफी सारे चैलेंजेस चलते रहते. तो मैं काफी देर से चैलेंजेस दे रही थी. एंड हाँ, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड. ऐसा नहीं होता कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू वुड डायरेक्टली जंप अपॉन टू चैलेंजेस एंड आप कहो कि मेरा पहला ही चैलेंज निकल जाए, सारे टेस्ट केसेस क्लियर हो जाए. ऐसा नहीं होता है. Since I was giving challenges from past 3 to 4 months, तो I had experience. तो और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं बनता था ना, बिल्कुल ही नहीं बनता था. और मैंने वहां पे एक्चुअली में कुछ नहीं पढ़ा था. मुझे लगा था कि रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं, तो आई जस्ट शुड अपियर फॉर द एग्जाम. एंड मैंने एग्जाम दे दिया. And after 2 to 3 days, I had a call from the HR saying that you've been shortlisted in the top 10 for American Express. I was like shocked कि I never gave an exam for this American Express. How did it happen? I wasn't able to believe myself कि ऐसा हो गया. तो फाइनली जब उन्होंने मेरे साथ मेरी डिटेल्स शेयर की, ये वो, तो तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, इट्स द ट्रूथ. तो आई वुड से जितने ज्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं, जितनी ज्यादा प्लेटफॉर्म की नॉलेज रखोगे, क्योंकि अगर आप पीपल आर लाइक completely dependent upon कॉलेज की हमें कॉलेज ही सब देते, ऐसा नहीं होता. कॉलेज provides you the path, it's you who has to explore it. Okay, so जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है. एट द एंड ऑफ द डे कॉलेज में भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट आती है, ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू एक्सप्लोर मोर अगर आपको आगे सक्सीड करना है. ओके, सो चैलेंजेस देते रहो और उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते रहो. छोड़ना मत. एक बार छोड़ दिया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वापस से कवर अप करना. क्योंकि मैंने ऐसे किया था, एक बार छोड़ दिया तो मतलब एक ब्रेक आ जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज को दोबारा से कंटिन्यू कर पाना. ओके, तो यू नीड टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट, पेशेंट, एंड साथ में नॉलेज होना बहुत जरूरी है हर एक चीज की. मतलब क्या कंपनीज आ रही है, कहाँ कहाँ चैलेंजेस हो रहे हैं, एंड that's it. Yeah. Thank you, Pratima Didi. It was a crazy story to hear, to be honest. One more question for you, Pratima. That it says that discipline and hard work are the bridges between goals and accomplishments. So, what are your thoughts on the same? I completely agree to that. This has been the two major factors of my Career. what I'll say, my
journey. These have been the two major factors. इनके बिना I wouldn't have reached here. तो जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहोगे, जितना ज्यादा मेहनत, जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे, उतना ही आपको सक्सेस मिलने वाला. ऐसा नहीं होता है कि इफ यू आर सेइंग कि जैसे यू नो दीज ट्रेंडिंग चैलेंजेस लाइक 6 days चैलेंज, 3 days चैलेंज, 30 day चैलेंज, वैसा नहीं होता है. दैट्स जस्ट यू नो, वो खाली आपको एक वो जस्ट आपको वो कर रहे होते कि हाँ आओ और आओ यूट्यूब पे व्यूज बढ़ाओ ये वो. दैट्स नॉट एट ऑल हाउ इट वर्क्स. आई नो हाउ द जर्नी वाज. इट मतलब it's a continuous process. You have to be in that process. You have to extract as much as you can. You don't need to wait for the result. जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करो and be disciplined with your work, whatever you're doing. You'll get the results at the end of the day. आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा. Okay, cool, nicely explained. So moving to the next, coming to Neha, who is the current president of ACM student chapter, who has an experience of clearing DSHO's rounds. Like, wow. So would you share your experience regarding this, Neha? Sure. Firstly, am I audible clearly? Yes, Yeah. yes, you're audible. Okay, great. So good evening, everyone. Thank you, Vaishnavi, Prathamesh, and the whole team for calling me here to talk in front of such a huge audience. Thank you, everyone, for joining, first of all. And okay, so I would like start from the DSHO experience itself. So okay, एक बारी क्या हुआ कि हमारे ग्रुप पे एक मैसेज आया कि ऐसे ऐसे कंपनी आ रही है. कंपनी का नाम नहीं बताया, कुछ नहीं, बस पैकेज लिख के आया था कि 36 lakhs का पैकेज है एंड रोल है QA का. ठीक है, फिर सोचा करे कि नहीं करे, बट 36 lakhs देख के मतलब ऐसे लगा यार कर देते, क्या ही होगा. ओके है ना. तो फिर फॉर्म फिल कर दिया. पता नहीं था क्या मतलब कौन सी कंपनी है. उन्होंने रेज्यूमे मांगा था उसमें, तो फिर वो भी भर दिया. ठीक है, तो वो हो गया. उसके बाद मैसेज आता है हमें कि आप मतलब एक ग्रुप बनता है एंड उसमें मैसेज आता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो एंड आपका ऑनलाइन असेसमेंट है. ठीक है, फिर उसके बाद हमें समझ में आता है कि ये डीशो कंपनी है. एंड फिर मतलब 2 दिन तो ऐसे ही चले गए कि भाई डीशो मतलब कैसे ये हो गया, ऐसे मतलब टेस्ट तो कैसे देंगे इसकी. तो फिर बाद में अराउंड टेस्ट का ड्यूरेशन मतलब हमें जब पता चला तो उसके बाद अराउंड 10 days के बाद ही टेस्ट थी. तो फिर मतलब और उसी टाइम में जब मैं जिस कंपनी में प्लेस हुई हूँ क्रेस्ट डेटा सिस्टम्स, उसका एक फंक्शन भी था. तो वो उसमें 2 दिन चले गए और 2 दिन तो ऐसे ही सोचने में चले गए कि क्या करे, इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए. सो व्हाट टू स्टार्ट विथ, राइट. सो फिर किया, कुछ तो स्टार्ट किया. ऐसे लिखे इतने सारे टॉपिक्स की हाँ ये करना है, DBMS करना है, ऊप्स करना है, दिस दैट. ठीक है, फिर दिया ऑनलाइन असेसमेंट एंड ऑनलाइन असेसमेंट वाज ऑन 3rd of October 2021. एंड उसके बाद मतलब मैं तो भाई मतलब मैंने सोचा कि चलो अभी हो गया इतना ही, उसके बाद तो आगे कुछ होना नहीं है. तो एक महीना ऐसे ही मतलब कुछ भी नहीं किया. एंड अराउंड अक्टूबर के 28th को मुझे मैसेज आता है HR का कि आपका अभी इंटरव्यू है. एंड तभी मतलब दिवाली थी तो हमारा फुल प्लान था कि चलो अभी गांव जाएंगे. ऐसे वैसे पूरी शॉपिंग हो गई थी दिवाली की, क्योंकि लास्ट ईयर दिवाली नहीं मनाई थी तो इस बार थोड़ा चांस था दिवाली मनाने का. तो फिर शॉपिंग हो गई थी, एवरीथिंग वाज सेट. एंड आता है HR का मैसेज कि आपका इंटरव्यू 8 को है आफ्टर दिवाली, लाइक 2 दिन बाद. तो फिर मतलब मेरा वो दिन तो ऐसे ट्रॉमा में चला गया कि अभी नहीं जाना है, दिवाली गई दिवाली, सब इधर ही है. तो फिर उसके बाद भी सेम प्रोसेस, क्योंकि एक महीना कुछ नहीं किया था, सब टच छूट गया था. तो सेम प्रोसेस की टॉपिक्स लिखे, क्या करना है क्या नहीं. एंड फिर वही वो 10 दिन ऐसे मतलब. एंड उन 10 दिनों में मुझे पता नहीं कि ऐसे एनर्जी आ रही थी कि मैं सुबह 5 बजे बिना अलार्म के उठ रही थी. लाइक नो अलार्म, लिटरली आई वाज मतलब पता नहीं क्या हो रहा था कि उठे जा रही थी मैं 10 दिन कंटिन्यूअसली. तो दैट वाज समथिंग लाइक आई थिंक कि वो पता नहीं यार क्या पावर थी. हाँ राइट, उसमें क्या पावर थी. ऐसा लग रहा था भाई हो ही जाएगा. मेरी मम्मा तो ये तक बोल रही थी कि अभी तू अकेली नहीं जाएगी यार हैदराबाद, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ. ठीक है, तो फिर ये हुआ. फिर दिवाली तो ऐसे ही निकल गई, मतलब मुझे तो याद भी नहीं क्या किया दिवाली में.
तो उसके बाद आ गया इंटरव्यू का डे एंड उन्होंने मतलब किया, बहुत पूछे क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा पूछे क्वेश्चंस एंड होपफुली मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था वो आता था, बट मैंने एक बहुत सिली मिस्टेक्स वगैरह किए उसमें, मतलब एक क्वेश्चन नहीं आया मुझे प्रॉपरली एंड एक थोड़ा डीबगिंग में ये प्रॉब्लम हुआ। तो फिर आफ्टर दैट ओनली एक ही इंटरव्यू था उसके बाद, फिर बाद में सिलेक्शन था, तो वो तो नहीं हुआ, बट मैंने एचआर से फिर कांटेक्ट किया कि भाई क्या क्या गलती हुई बताओ, तो फिर उन्होंने बताया कि मतलब एक तो आंसर मैंने किया ही नहीं था, तो उन्होंने कहा कि फॉर डी शो अ सिंगल नो इज नो। तो फिर ठीक यार, ओके नो प्रॉब्लम। तो दिस वाज द होल जर्नी एंड आई एम रियली रियली लाइक थैंकफुल कि ये टाइम आया and I learned a lot of things from that. So that was it. Yes, it's great experience it was. Another question for you, that how one should prepare for placements. Okay. So placements के लिए prepare करना मतलब like start early first of all, and if you are aiming for computer science placements, then it is sure, like it is what we can say obvious to study all the core concepts of computer. So उसमें क्या आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है, डेटा स्ट्रक्चर्स आता है, डीबीएमएस आता है, इवन सिस्टम डिजाइन कम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर एंड नेटवर्किंग का थोड़ा मतलब ओवरव्यू तो आना चाहिए. सो दीज थिंग्स विल रियली हेल्प यू अ लॉट. सो दीज आर द थिंग्स एंड स्टार्ट अर्ली एंड एज प्रतिमा सेड कि बी कंसिस्टेंट, क्योंकि मतलब अगर हमने एक महीना किया एंड देन हाँ मतलब ऐसे सोचा कि एक महीने में डीए से कर दूंगी या फिर डीबीएमएस कर दूंगी एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो ये नहीं होगा. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू रिवाइज एंड मेन थिंग इज उसके एप्लीकेशंस ढूंढो यार रियल लाइफ में क्या है, like what are the applications, why do we use this, why data structures is used, because it is used for memory management, right? कि कैसे होगा memory में, because everything is a game of memory. So ये कैसे होगा, so these are the things which we should implement and मैंने भी बहुत late start किया मैंने ये सब. So I feel कि मतलब एक चीज हो ऐसे कि मैं जो पहले जाके करूँ तो start early is that thing. Yeah, it was great to hear, Neha. And even the Disha story was even more crazy. And now I feel like there's a long way to go, to be honest. Thank you. Okay, so coming to our dynamic guy, Divyansh, I just wanted to know that what's your view on how we should face failures, and how was your approach while dealing with failures? Like how many companies did you apply for, and what all setbacks did you face? Okay, so good evening everyone. Okay, so पहले तो मैं अपनी थोड़ा सा छोटा सा बैकग्राउंड बताऊंगा जहां से मैं अभी पहुंचा हूं. So let me tell you, before joining college, so before taking CS and all, I was in my 12th class. मैं मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था कंप्यूटर के कोई भी कोर्सेस का एंड ऑल. लाइक आई वाज अ फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट, राइट, स्पोर्ट्स एंड ऑल. ओके, अब उसके बाद में जब मैं फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर में आया, so I was so dumb that I used to think that C is a language and its full form is computer, and then C++ is computer plus plus. This was, I mean, इतना dumb था मैं. Okay, so अब मैं फर्स्ट ईयर में आया. Okay, वहाँ पास मैंने आया तो पहले तो एग्जाम होते थे, ऑनलाइन एग्जाम्स होते थे, एमसीक्यू एंड ऑल. कोविड नहीं था. सो सितंबर में एग्जाम्स आए. ओके, एग्जाम्स आए, नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए. मैं तो था वही मैथ्स वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला. अब नए सब्जेक्ट्स आ गए, एफपीएल सुना, ठीक है. अब देख रहा हूँ वो कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एंगल वैंगल होते हैं, यार ये कैसे चीज है. अब ठीक है, एग्जाम दिया, 25 मार्क्स का पेपर था, 6 नंबर आए बस. ठीक है. अब नया I न्यूज can पता feel you. अब नया न्यूज पता चला कि अगले एग्जाम में, अगले ऑनलाइन एग्जाम में मेरे को एटलीस्ट 14 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 25 टू पास इट. Okay, so and at least you have to score 20 marks out of 50 in your online exam to pass. Okay, so अब मैं डर गया एकदम, पढ़ना पड़ेगा यार, ये क्या चीज है, पढ़ना पड़ेगा एफपीएल एकदम. अब मेरा रूममेट था, ही इज अरविंद पटेल. सो he was from old college. He is actually in old college. So अभी हमारे बैच में था ओल्ड कॉलेज से, CS IT से. Okay, she also got placed in Just Pay with a package of 13 LPA, and he got a raise of till 18 LPA as well. Okay,
So he taught me a little bit. Okay, in 2 weeks he taught me a lot. Okay, like the basics, how things work, syntax and all. After that, I worked for like 3 weeks more. Like दिन रात पढ़ता रहा मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 12 घंटे पढ़ता था क्योंकि कुछ समझ में तो आता नहीं था, तो पढ़ना था. कुछ एमसीक्यू अमोल धागने सर ने लाके दिए 1000 क्वेश्चंस. पूरे 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए शायद मैंने 5-6 दिन में, क्योंकि यार 30 तो पड़ी थी यार, 30 तो पड़ी थी क्योंकि 14 मार्क्स लाने थे आउट ऑफ 25. ठीक है, तो पहले ऑनलाइन एग्जाम के बाद अप्रोक्सीमेटली 67 फॉर नॉट 60 लाइक 45-50 डेज के बाद हुआ सेकेंड ऑनलाइन. Okay, so after giving that, I scored 22 out of 25. Okay, so in that online exam I also topped in mathematics because मेरे को अभी भी याद है second online exam था. Only I scored 25 out of 25 and whole A and B division, I guess, or someone's also scored in B division. Yeah. So this much I worked. I mean, ये होता है रिजल्ट अगर फट जाए किसी इंसान की तो इतना पढ़ सकता है कोई आदमी. ओके, सो उसके बाद अभी बात करता हूँ मैं. देखो, समझ में आ गया मेरा बैकग्राउंड कैसा था, तो मैं अब यहाँ तक पहुंचा फोर्थ प्लेसमेंट तक. तो अभी मेरा प्लेसमेंट हुआ है लाइक 90 डेज पहले हुआ है. ठीक है, सैस में. सो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में चलो ऐसे ही निकल गया. मैथ्स था, कुछ था नहीं खास. ओके, सो मेरे बहुत से आईआईटी फ्रेंड्स हैं. लिटरली आई मीन आईआईटीएन फ्रेंड्स बहुत सारे हैं मेरे. खड़गपुर, राहुल, एनआईटी राउरकेला में, और बहुत से फ्रेंड्स हैं. उन्होंने बताया कि वो क्या कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में. सो व्हेन आई कंपेयर्ड देन आई गॉट टू नो दैट वी आर नॉट डूइंग मच, बिकॉज जो हम नॉर्मली थर्ड ईयर में करते हैं दे आर डूइंग दैट इन फर्स्ट ईयर. और उनके सीनियर्स एक्चुअली उनके नॉट सीनियर्स, देयर कल्चर ही ऐसा है कि वहां आप जाओगे, इवन अ मैकेनिकल स्टूडेंट इज डूइंग द कॉम्पिटिटिव कोडिंग. ओके, सो लेकिन एक और सिंपल सा फंडा है. ओके, कि वहां पास कॉम्पिटिटिव कोडिंग अगर कोई कर रहा है तो उसमें ही बेस्ट बनता है. अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है तो उसमें ही बेस्ट बनता है. कोई ऐसे वो नहीं करते कि हम दोनों करेंगे और एक एवरेज लेवल पर रहेंगे. वो कोई एक चीज पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव में बेस्ट हो तो भी आप प्लेसमेंट लेके जाओगे और अच्छा फोड़ के जाओगे अगर अच्छे हो. और अगर आप डेवलपमेंट में अच्छे हो, प्रोजेक्ट दिखाओ, रिज्यूमे दिखाओ, इंप्रेस होंगे, आपको जरूर हायर करेंगे. पैकेज ट्रस्ट मी अच्छे खासे लेके जाते हैं, क्योंकि मैंने देखे हैं. ओके, अगर आप दोनों में अच्छे हो तो फिर तो सुभान अल्लाह. ठीक है, तो क्योंकि वो तो आप डिमांड में हो, आप मैन इन डिमांड हो. ओके, मैन एंड वुमेन इन डिमांड हो. ठीक है, तो अभी थर्ड ईयर में मैं आया तो लॉकडाउन था, घर में आया. अभी मैं देखा मेरा एक फ्रेंड है सूरज यादव. ओके, ही इज प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग टेक स्किल्स एंड ऑल. ओके, तो मैं देखा वो क्या कर रहा है, मैंने भी पढ़ना शुरू किया. ठीक है, तो मैंने भी पढ़ना शुरू किया, कुछ डेवलपमेंट किए, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए. And then Aman also helped me. Aman, I was not aware of Flutter at all, but there was a college project and we have to do that. And Aman guided me a lot about Flutter and all. So वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई. फ्लटर सीखना शुरू किया, डेवलपमेंट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. बस मैंने यूआई क्रिएट किए थे, कुछ ज्यादा क्रिएट नहीं किए थे. ओके, फ्रंट एंड की यूआई, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस आया कि कर सकता हूँ, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है यार. ठीक है, तो उसके बाद फिर आ गया प्लेसमेंट्स फाइनल ईयर के. अब मैं पढ़ना शुरू किया बहुत लेट, लाइक फोर्थ ईयर में आ गए. फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ है जुलाई एंड. ओके, जुलाई एंड से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना. तो मैं समझ गया था कि मैं काफी पीछे हूँ. कंपनीज आनी शुरू हो गई है. पहली कंपनी आई थी आई गेस क्रेस्ट ही आई थी पहली कंपनी. आई डोंट रिमेम्बर, बट शायद क्रेस्ट आई थी सबसे पहली कंपनी. वो मिस हो गया था मुझसे एक्चुअली, क्योंकि काफी पहले आई थी और मैं अप्लाई नहीं कर पाया. 45 डेज का शायद गैप था, तो मुझे पता ही नहीं चला. तो वो काफी मतलब मिस हो गया. तो काफी रिग्रेट फील हुआ मुझे ही नहीं, मेरे क्लास के बहुत से स्टूडेंट्स उनको रिग्रेट फील हुआ कि हम इतने अटेंटिव नहीं थे. हमारी गलती, कितने अटेंटिव क्यों नहीं थे हम. ठीक है, उसके बाद फिर अटेंटिव हुए. सो व्हाट आई स्टार्टेड फाइल. मेरे को पता है कि 5 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेसमेंट के लिए. ओके, भली कॉलेज में अभी आपके 40 सब्जेक्ट्स हैं, 5 आप मास्टर करो प्लेसमेंट के लिए. आपके ऊप्स होता है, ठीक है, आपका डीएसए होता है, ठीक है, आपका डीबीएमएस एंड देन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी ऑफ कैंपस कंपनीज को, लाइक अच्छी कंपनीज को, मैं बहुत सी यूनिकॉर्न कंपनीज को अप्लाई किया था, लाइक पोस्टमैन, ब्राउजर स्टैक, जेरूदा को भी अप्लाई किया था. मतलब कम से कम 10-15 तो अच्छी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को अप्लाई किया था. और उसके अलावा मैंने ऑफ कैंपस में करीब 60-70 कंपनीज को अप्लाई किया था. ठीक है, तो मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट हुआ था हार्डली आउट ऑफ दिस लाइक हाउ मच कंपनीज, लाइक 10-15 कंपनीज, नॉट मच, क्योंकि बहुत अच्छा भी डेवलपमेंट का प्रोफाइल नहीं था और कॉम्पिटिटिव कोडिंग में मैं एवरेज था, कुछ बहुत बड़ा तोप तो था नहीं. ठीक है,
उसके बाद तो मेरा सिलेक्शन हुआ था किस्मत से, मेरे को लगा नहीं था पर किस्मत से ब्राउजर स्टैक में हुआ मेरा, और बहुत अच्छी कंपनी थी। तो मैं इस होप में था कि शायद हो जाए इस कंपनी में, शायद हो जाए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं जुलाई से अप टिल जुलाई सितंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ओके, ये 4 महीने 4-5 महीने बहुत पढ़ा था, लिटरली कुछ नहीं आता था और बहुत पढ़ा मैंने, ठीक है, कुछ नहीं से बहुत पढ़ा। और एक चीज कॉमन था, डिसिप्लिन, रोज उठना है, वही कर पढ़ना है, खाना पीना सोना, यही यही था रोज का, ठीक है, रोज उठना, खाना पीना, पढ़ना, सोना, ठीक है, यही था। क्योंकि अब लेट था तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एंजॉयमेंट था नहीं कुछ लाइफ में उस समय, तो गलती की थी तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ता था, तो खूब पढ़ता था। डिसिप्लिन की वजह से एक टाइम ऐसा आया कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ऐसा आया कि मेरे को इतना इतना मेरे को याद हो गया सब कुछ कि मैं पढ़ना ही छोड़ दिया था। मोस्ट ऑफ द चीजें, मतलब टॉपिक पढ़ो, मन ही मन में सोच लेता था कि यार यार ये होता है, ये होता है, ये पूछ सकते हैं, ये हो सकता है, एग्जाम्पल्स ये हैं इनके कि रियल लाइफ में कहाँ यूज होते हैं। अगर आप कभी मान लो कोई डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल दे रहे हो तो एकदम सिंपल सिंपल वाले तो दो ही, पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाले भी दो कि कहाँ कॉम्प्लिकेटेड वे में यूज होता है इनका, ठीक है, कुछ सिंपल एक दो दो, वो तो ठीक है, वो कॉमन चीज है। लेकिन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो सामने वाले कि आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी दोगे कि ये कहाँ होता है कॉम्प्लिकेटेड वे में, ओके। तो क्योंकि मुझे इंटरव्यूअर ने बताया था, मेरा एनवीडिया का इंटरव्यू था, और वो एट द एंड वो एवरेज लेवल का गया, तो एवरेज लेवल का तो एक्सपेक्टेशन उनका होता ही नहीं है, एनवीडिया तो नाम से वो समझ गया होगा, ठीक है। तो एनवीडिया में उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने मुझे साफ साफ बताई कि ओके, कि आपको पहली बात तो जो भी आप एग्जांपल्स दे रहे हो, इट्स अ गुड थिंग आप एग्जांपल्स दे रहे हो और आप सही एग्जांपल्स दे रहे हो, बट आल्सो टेल अस दैट इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे वेयर यू यूज स्टैक, वेयर यू यूज क्यू, वेयर यू यूज डीएफएस बीएफएस, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी दो, सो दैट हमको हमको समझ में आए कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने इसको पढ़ा है दिल से, हमको ये ऐसे थॉट्स चाहिए आपके, ओके। और अगर देखो बात करें अब फेलियर्स से कैसे डील करना है, देखो आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपका पहली बार में ही हो जाए, इनका हो जाता है, इट्स अ गुड थिंग, आप मेहनत किए होगे एंड ऑल। लेकिन जो लेट हो, तो मैं क्या था, काफी कंपनीज में रिजेक्ट हो गया, ऑन कैंपस आई थी काफी कंपनीज, कुछ में तो मैं बैठा ही नहीं। रीजन ये था कि मेहनत की थी भाई, तो उतना पता चलता था कि 3-4 के लायक तो डिजर्विंग होनी मैं, ठीक है। तो 3-4 लाख में मैं अवॉइड करते रहा, काफी प्लेसमेंट कोई होगा नहीं तो अच्छी बात है, काफी अवॉइड किया मैंने, केप जेमिनी मास रिक्रूटर्स जितने भी थे, क्योंकि मेरे को पता था कि यार उसके लायक तो नहीं हूँ। तो मैं पढ़ता गया, एट द एंड एक बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो लगी गया, अभी SaaS इज अ रियली गुड कंपनी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स एंड ऑल, तो उसमें लगी गया, ठीक है। और इसका भी इंटरव्यू इतना टफ था, एक्चुअली 50% ही आंसर मैंने दे पाया था, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कुछ थे कि थोड़े बहुत आउट ऑफ सिलेबस थे, जो कि कॉलेज में भी शायद आप नहीं पढ़ोगे, आप तब पढ़ोगे जब आप फ्रीलांसिंग में कुछ कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर्स बनाते हो, लाइक डिजाइन पैटर्न्स एंड ऑल, ओके। तो वो काफी, मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ आपके, लाइक सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड ऑल होता है, ये सब एसएमडी, सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड डिजाइन, बट ये उसमें से आप वो बेसिक सीखोगे, वो थोड़े हाई फाई पूछते हैं, तो वो वाले पार्ट्स तो अभी आप देखो, जैसे बेसिक सीख लोगे अच्छी बात है, एसएमडी एंड ऑल। तो यूनिकॉर्न्स जनरली पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के, आर्किटेक्चर बताओ मेरे को, आपने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, आर्किटेक्चर बनाओ, बताओ मेरे को, अगर नहीं बनाया तो भी वो पूछते हैं, अगर मेरे को चलो ये बनाना है आपको, तो बताओ मुझे कि आप क्या आपके दिमाग में पहला थॉट क्या है, आर्किटेक्चर क्या बनाओगे आप, ओके, ठीक है, ये हो गया। और अगर देखो फेलियर, देखो सबसे पहली बात तो मैं एक बोलूंगा कि अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। गलती से भी अपने आप को अपने दोस्त से, ठीक है, जो है अपने राइवल से, जो भी कहो, कंपेयर मत करना, आपका सब अपने पेस से पढ़ते हैं, सब अपनी आप अपनी पीछे पीछे गलती करके आते हैं, ठीक है। कोई, Completely agree with the यस, thought. कोई अपनी गलती जल्दी सुधार लेता है, कोई अपनी गलती लेट सुधारता है, ठीक है। तो मेरे केस में भी वो एक कॉम्प्लिकेटेड टिपिकल रिलेटिव्स होते हैं ना, वो थे मेरे केस में, तो टिपिकल रिलेटिव से समझ गए होगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। लड़का कब प्लेस होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, ये सब अगल बगल है मेरे इधर पास, ठीक है, घर पे। तो वो सब थे। तो आपको पहली बात तो देखो, वो डिमोटिवेटिंग एक फैक्टर रहता है, मेरे केस में तो था। लेकिन गलती मैंने ये कर दी, मैं अपने आप को कंपेयर करने लगा कि यार ये प्लेस हो गया, मैं इससे अच्छा हूँ, मैं क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, मैं काफी अच्छी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो अब वो सबसे बड़ी गलती है आपकी। देखो एक छोटा सा फैक्टर होता है कभी कभार, एक छोटा सा कभी कभार लक फैक्टर भी होता है, ठीक है। आपने मेहनत की, उसने भी मेहनत की, क्या होता है कि किस्मत होती है कि उससे वो क्वेश्चन पूछ दे जो उसको आता ही है, और आपसे वो क्वेश्चन पूछ दे, आपने भले ही सब पढ़ा हो, लेकिन कुछ पार्ट रह जाता है कि आप मिस करोगे ही, आपसे वही क्वेश्चन पूछ दिया, तो थोड़ा सा लक फैक्टर रहता है। लेकिन देखो 100% नहीं कहूंगा लक फैक्टर रहता है, मेहनत बहुत जरूरी है, हार्डवर्क करो।
देखो सबको पता है कि जो भी कंप्यूटर साइंस हो, यहाँ पर सब कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, ठीक है। तो सबको पता है कि हमको पढ़ना है, सबको पता है कि रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है, स्पेशली हमारे तो सबसे बेस्ट है, हम चाहे तो डिग्री ले ले इससे ऑनलाइन, ठीक है। सबको पता है ऑनलाइन अवेलेबल है सब कुछ, है ना। सबको जॉब चाहिए, सबको प्लेसमेंट से ही जॉब चाहिए, चाहे ऑफ हो चाहे ऑन हो। अगर किसी को जॉब नहीं चाहिए तो एंटरप्रेन्योर एंड ऑल तो बात अलग है, लेकिन किसी को जॉब चाहिए तो रास्ता सबको पता है। क्या रह जाता है, एक और चीज पता है कि हार्डवर्क करना है, वहां पर सब लोग पीछे रह जाते हैं। सबको पता है रास्ता, देखो सिंपल रूट है। गाइड करने के लिए आपको बस क्या चाहिए कि आपसे हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, ये आपको गाइडेंस होनी चाहिए, हम दे सकते हैं। बाकी रूट आपको पहले से पता है, आपको रूट पहले से पता है कि आपको मेहनत करनी है, ठीक है, रिसोर्सेज आपको अवेलेबल है। आप सिविल और मैकेनिकल वाले तो हो नहीं कि प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपका जो है सब कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन। आपको पढ़ना है, यूट्यूब आपको समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब जाओ, वहां से देखो, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर साइंस का इतना ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है। अब आप उनकी सोचो जो मैकेनिकल और सिविल में है, उनको तो भाई प्रैक्टिकल के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, उनको समझ में नहीं आएगा। तो उनको उनको एक तो जॉब हायरिंग में भी कम हो रही है, उनको कितना स्ट्रगल है, हमारा स्ट्रगल कम है। हम सबको जितने भी सीएस स्टूडेंट्स हैं सबको पता है रूट, ठीक है। तो रूट सबको पता है, हार्डवर्क की बस देरी है भाई, हार्डवर्क कर लो, मेहनत कर लो, और कंपेयर मत करना कभी जिंदगी में अपने आप से किसी को, अपने पेज से पढ़ो और अपना बेस्ट दो, ठीक है। अपना बेस्ट दोगे तो कभी अपने आप से रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है। अपना बेस्ट दोगे तो एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं करोगे यार मैंने ट्राई नहीं किया था, मैंने बेस्ट दिया, ठीक है। तो दैट्स ऑल। Yeah, it was so motivating, दिव्यांश भैया। Like आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गए। अब तो मुझे लग रहा है कि मैं तो फोड़ ही दूंगा। हाँ Yeah, it was so inspiring. Yeah. Okay, now moving on forward, and I know, all our AI enthusiasts here have been waiting for a long time now, and let's not make them wait any more longer. So we have our special guest, our AI expert himself, Karthik Karande. So Karthik, what about you? How was your experience? Like, what all things will you suggest for us, our machine learning enthusiasts, like me myself? Like, what are the key things we should note to break the wheel, like you, and be a machine learning engineer as a fresher itself? First of all, thank you. Am I audible? Yeah, 100%. Yes, you are. Yeah, so means they were saying you will make according to your surrounding. So first of all, first order is that just improve your surrounding. I think some of my friends are here in the meeting, like Vaibhav Shinde, Vishal Jagtap, and Pratik Survey. So they are the key factor in my life. Because of them, I am here. They guided in me in every situation. So first of all, I will try to give my introduction. I am Karthik Karande. I was trying to be an aeronautical engineer, but I accidentally landed up in the computer science domain, and I was not uh, enjoying this domain. In the first year, I have 2 backs. I was in the first online. I was not clear to FPL. I was scored 11 in the FPL, and I have big tension that how I can go the 9 marks so I can get past. So one of my friend called Pratik Sapre, so he was expressing me the what is the plus after pre-order post-order, and because of him I cleared my FPL because I want to move into the aeronautical, so I don't have any interest. In the second year, I failed in DSA as well as OOPS. So I think I have many backlogs, and I was also not doing very good in academics. I think everyone know about all of my friends know about it. So what happened when I was in my third year? So all of my friends are getting placement in some company like Capgemini, so any companies, but I was not able to clear any single interview. So सब बोल रहे थे कि भाई तेरा नहीं होगा, तब ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था मेरा, but फिर मैंने खुद से स्टार्ट किया, and the lockdown is really blessing for me. So one of my friend Vishal Jagtap, he guided me how to start machine learning. So I follow him thoroughly. So I create my schedule, and I was working 3 to 4 hours daily on machine learning. So first of all, I start with the Python because I'm very weak at coding. So I give my first one to improve my Python skills. Then I start with I also create a roadmap for you, which I can share in the end, so you can learn from that roadmap. It is not a DSA or any roadmap, but I will try to share for which I learn. Then I was following this routine for I think more than 1 year. Then I decided until I didn't get placed somewhere in a good company, till that moment I will not open my Instagram. So what first year which I did, I just blocked my Instagram for 6 months, and when I got placed on that day, I opened my Instagram and I post the goodies that I get from my company.
So till that moment, I interviewed for 18 companies, and the companies like I will just tell you the name of company. The first was NLP Watt, second was ITC for ITC, the third was Ola. Then I also interview for I just created one online test for the Tesla as well, and the third company was IHS Market. Then I interview for two startups called Takeaway Solutions and Automatic AI. And biggest company which gave me highest package was Incedo INC. They are offering me 13.5 LPA, but I don't know. In the last round, because of I don't have any experience in this domain, so they rejected my proposal. And in the last moment, the HR said our client required a person who has experience of 2 years. So I did clear the company, and I also got many offers from Chennai, Bangalore, but I don't want to leave Pune because Pune is low. So in the final time, I got one offer from a product-based startup in Pune called NLP Bots, which specially focus on NLP and machine learning. So I interviewed there, and my interview went for I think 1.5 hours. So the interview didn't get very well, but I have means I stuck at coding, but my machine learning and NLP concept was clear. So the person think that let's give me a chance, and he just give me 1 month of internship, and in which I have to do some projects to just let him know that I am capable of being field, in working this field. So I work on the NLP part, and that's how I got selected in the startup. And the good news that our startup just recently got a funding of 6 millions in last month for the NLP and AI improve use cases. So yes, I'm happy because I'm working there. And anything means I would just like to share how you can approach the things. First of all, when you are in second year of college, means I will tell all things honestly, because the syllabus which we are teaching in the colleges, they are not related to the industry. This is the first thing. Miss, you should respect anyone, teachers, everything, but there are some things which will you require in the industry that not in our syllabus. So you have to do that thing separately or do from anywhere you do. The second key factor, when you are in second year, do DSA properly, even if you don't understand anything, but try to do it. Because what is the problem? You have enough skills, but what happens if you are not able? Means in every company, the first round is of DSA. If you have very strong skill, but you are not able to clear the first round, then the skills are of no use, because you are not going to enter in that company. So if no one teaches you DSA properly anywhere, so I don't know, but you have to do that thing properly. I'm not overhyping this thing, but just do that. You can get the clear understanding of DSA. Means I'm also not very good at DSA, but I'm learning. So for that you can also ask Pratima how she prepared, so you can get some knowledge, because by using about minute key and she got the package. So first of all, do the DSA for the intermediate level. There are some subject in our college like computer networks. Just I think मिलेनियम में बहुत अच्छे से पढ़ाती है वाला सब्जेक्ट. So अगर आपको उन्होंने प्रॉपर से फॉलो किया, मतलब आई थिंक लाइक मिनिमम उनके अपेक्षा तो मत बंक करो. देन पूजा मैम भी बहुत अच्छा डीबीएमएस पढ़ाती है. And the things which are required most, if you want to do in some of SD role, then ISEE and SD वाले सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि वहाँ से आपका हो जाएगा. आपने अगर बुक बेसिस से फॉलो किया तो भी हो जाएगा. ठीक है. एंड मेन थिंग for the machine learning part, just prepare our college book, because means you will just clear the theory down from there, but for the practicals, not a single line from college book is going to work, so you have to do some hands-on. So as well as for clearing the interview rounds, just read the college book, do the MCQs, because I think for machine learning roles they ask some MCQs. So I think you can just learn from Sand Foundry. So they provide very good MCQs for the machine learning role. And second part, just focus on the process. Don't look for the results. Means I can show you. I think I don't know if it's visible or not, but these all are my books which I have used for my machine learning. Each and every algorithm is there. Also prepare for the mathematical intuition of the algorithm, how things work. Don't just focus on the library, but also focus on the optimization part, because that thing's going to run in the long end. Because means there are many people who just import the libraries and do the code, but optimization is matter. I will just give you a use case. Suppose you are running an online credit card company or credit card company, and suppose you are doing some kind of transaction. But what is the problem? Suppose you are doing transactions which are in the limit of 10,000 or 20,000, but suddenly if you do some kind of transaction which beyond the limit, like suppose you do a transaction for 1 lakh rupees and the transaction is out of India. So on that time, the company will directly call you, because the behavior which you are doing, it is not normal. So on that time, if you are using some algorithms like random forest or some Ansible algorithms, so they are going to take a lot of time to run
the query which you have said. So in that case, there are some algorithms which run very fast, like classification algorithm, like uh, SVM and logic regression. So you can focus which algorithm to be work where. So means if you just tell the interview that I know these things, how the how algorithm works, how the time complexity for the algorithm works, how algorithm take to train time. So if you focus on all these basic things, then you are clear with all your interview. So I think should I just share the thing which I made to share with you? Yes, I Yeah, created one roadmap. Yeah, in the end I can share that. Can I just share? Yes, yes, yeah, yeah. yes, yes. I think my screen is visible, right? Yes, yes, it is visible. Just a minute. Yeah, so this is the thing which I made. Means if you follow this properly, then you are easily able to clear the machine learning interviews. But if you want to focus on some deep learning and NLP interviews, then we will decide in some other session. So yeah, so just a clear thing. If you are in the first year or second year of engineering, so I think you have a subject called DSA. So if you do that on the time very properly, so that within that time, it will be sufficient. So means most of the companies they are which offer you the salary about 8 to 9 lakhs. They don't ask much about DSA. But if you want to focus on good products company, so on the time you there is a must skill of DSA. So you can learn DSA for that. And so if you spend 3 to 4 months on DSA, then it will be enough because I think the more part they require, which is on the data part. So you don't have to spend a lot of the time on the DSA. So the main thing in the machine learning is statistics. So if you want to get the whole understanding of data, then you need to very good at statistics because all the insight which you are going to get are from the data. So these are few of the points which I mentioned here. So if you read that point thoroughly, and I also mentioned some resources from where you can learn all these points. So it will be very beneficial for you. So in the statistics, there is a term called population sample probability distribution. All this kind of distribution. What is the CD of mean, median, mode, skewness, kurtosis? So, using all these terms, you will get the most understanding of your data, how your data is, and what kind of transformation you are going to need there. So, these all the other things. So, I think I also mentioned some resources like Khan Academy is the best resource for the statistics. You can also learn from the StatQuest. This George Stromer, he's a guy from USA. He teaches very well. And there's a guy called Krishna. I think everyone knows about it. So he also teaches very well DSA. So you can also follow these 3 channels. And if you need any help, then there is a web channel called Machine Learning Mastery. So you can also refer the channel because that guy did 2-time PhD in the machine learning and statistics. So he's the god level man. So you can also follow him because that guy going to give you the real time insight which no one gives because that guy devoted his 20 years in the same domain. So you can going to learn a lot of things from him. So what I will suggest, just start with if you don't know Python, just start with Python. Invest one whole month. Do all things like for loop, if loop, all the basic functions like split, as type, all things, data type, learn all that function. Then you can learn with. I think am I audible and everyone is able to get me? Yes, 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 you are audible. So just start with the libraries like pandas, numpy, scipy. So you will get a basic understanding of data manipulation. For visualization, everyone is using Seaborn and Matplotlib, but there are some more libraries like Plotly, Coupling, and SQL, which are going to give you the graphics in three dimensions. It will be more dynamic to the user and also understand give you a more insight of data. So if you can also try some auto visualization libraries in which you just have to pass the data and the libraries will automatically give you the insight of the data. So if you want to save your time on the data visualization, so you can go with this library. And I think everyone know about the SQL, and it is a god level library which reduces all your work. So you can also try with the SQL. If you spend 3 to 4 weeks on this all this part, then I think you will be good enough to work in this domain. So it means you will get the basic understanding of data as well as you will work very fine. So I think I mentioned some site like Krishnayak, Code Basics, and Free Code Camp. For the practice, you can also refer the Kaggle. So you just have to go to the Kaggle, and I will just told you how to use Kaggle in a very efficient way. Suppose you want to run any use case. So what? Just go to the Kaggle. I think just a minute. I will share my screen. So this is Kaggle.
So lot of people who are doing means who are the 4-time 5-time grandmaster on Kaggle, so they are here and they are sharing their open source code. So you can check that how these people are approaching the real world problem. So these people are working in this domain for last 8 to 9 years, and they are sharing their solutions, how you can approach with the minimum code with the high accuracy. So you can learn that if you want to just do some kind of visualization, suppose you want to learn regression, then just go for the regression. You will see lots of problems are there, like means from relevancy, means many problems are there. Suppose I will just take a normal use case for house price prediction. It is a regression case. Just go on the case. You will get all the data for the problem here, and you can just go on the code section, and I think you can search by the hotness. Means there are a lot of people who do mastery in this competition, like best score recently run most comments. Suppose I will just choose the best score. So you just go here, and people who get gold marks, they are topping in this competition. So you just select one of the code and just go through it, how these people approach this problem. So you will get the overall understanding how things work in the uh, real time manner. You will also get the data. You can check all the code, how these people are how these people are going to give you all the documents, all the codes, and you will also see the references, and you can also see the reference videos or from where they copied the code or anything here. So you can also learn from this. Like there are some other competition like in NLP competition, like real time word to wake or real time emotional tracking or ground net, or a tsunami is going to come or not, or chances of earthquake. So these real time people are also solving there, and they're also getting rewarded. Like the prize for the Kaggle competition is around start from $15,000 and it can go up to $150,000. So if you just do win enough, then you are also able to win a very good money. So this is a recent competition. So you can see the prices of $15,000. You can also win a lot of money. And I think machine learning is a thing which anyone can do. I just know one guy called Tanul Singh. He's from mechanical background, and he's the Kaggle grandmaster, and he was working as the Jarvis AI ambassador. And currently he got a job of full-time AI engineer from California. So he's working in a California-based company. So I don't think the branch is any issue in this case. So I will just a minute. Yeah, so you can see yes, this is the guy, and you can see this guy plays for Hero Honda for 3 LP tech, and now he's a more than 50 LP in a AI company, and he's from mechanical background. So there is a no barrier for learning. So you can learn anything from. There is no limitation of branch. There is no limitation of place. You can learn anything. Lots of resources are there. Just don't confuse with lots of resources. Just follow resources and go in depth and do your own study. Look which things are working for you, which things are not working for you, and accordingly schedule your timetable. So I will just show you the look. This guy is from mechanical. So he is a full-time data scientist. Now he is a Jarvis engineer AI, and he's currently the global ambassador for Jarvis AI, which is the world's greatest open source GPU provider for the energy problem. And currently he's working as an applied AI scientist in California. And so this guy is from village, and he's one of my friends. And so if the guy from mechanical can do this all these things, then then definitely you don't have any limit because they are from CS. So coming to the PPT, so these all topics you have to prepare. Then for pandas, these are some important topics which you have to cover. This follow the NumPy official documentation, which is very good, and SQL documentation are also very good. Yeah, so these are the topics which I have to cover properly, like supervised learning, unsupervised learning, different types of classification, regression, clustering algorithm. I think you can also refer the Andrew Wenge's playlist on YouTube. He's the god of machine learning. You can call him god. You can also if you are not going to get the concept of Andrew Wenge, like his mathematical concept, then for simplification you can jump to Chris Naik playlist, because this guy also explain all this concept in very well manner. So this is for machine learning algorithm. For machine learning algorithm, you can refer Chris Naik and Andrew Wenge's channel. So you will get a in-depth understanding. And for the means these are the import algorithms which you can prepare. So I think these are some new algorithms like XGBoost, CataBoost. So these work on the ensemble techniques. So what happened in ensemble? The multiple votes are get generated. They match the votes, and on the basis of the votes, they will going to give the output. So this means the robustness of this output is very good, and it will strong algorithm. They will take some long time for training, but you can try them. And the last thing, so these are the very main part of the machine learning algorithm, because data scientists spend most of their time in data processing. So you have to do all these things very properly. You can refer Kaggle
and many documentation are available there. So you can learn from this documentation, and in that I will sharing all this documentation with you. And this is the machine learning pipeline. I have some books and some codes which I use. So I will in the end I will just share all these codes and the books with Neha, so we can share with you. Yeah, so that's all. And just try to focus on the hyperparameter part. Yeah, hyperparameter part and model deployment part, because this is not if you're a machine learning engineer, then just you're going to deploy just create the machine learning model and going to give to the software development that I am done with model. Just look what you have to do. So if you focus on the deployment part as well, you will just learn. You just have to learn the basic API part. Then you are able to build a full stack application, which is not great in the term of UI, but you can share your use case to someone that I created this part and this is working. You can also add this part in your resume, so you can it can be more helpful to you. Yeah, so that's all the documentation I will share with you. And the most part, I don't think if a company coming for machine learning role in colleges, then it is great. But I will just tell you how you can apply for the off-campus placement. So anything you are doing in the field of machine learning, just share it on the LinkedIn, because and I mentioned people who are leading that thing. So you can get it if someone from that field like your post or comment on post, so that thing going to manipulate in his old all environment. So any people from that domain who's following that person will able to see your post. If they like your work, then they will directly going to call you. In my case, I received 3 calls from the different startup from LinkedIn itself. I did not approach anyone. And second platform is like Naukri. So what you have to do, the skills which you know, means each and every skill you just have to mention on the Naukri that I know skills, and the skills which you are good at, you just mention that skill in your resume. So what it does, if you have lots of skills in your Naukri profile, when any recruiter come to the Naukri profile, so he will search you on the basis of your skills. So what happen if you mention all the skills which are relating to machine learning, so what happen, so your resume will get shortlisted for the recruiter, and you will go into the company. So but why I'm going to tell you, why I'm telling you this, because due to lot of skills, it means your resume come on the top. I think there are 4 million people on the Naukri, and I think 10 to 10,000 people are applying for the machine learning role. So due to this fact, your resume get on the top, and the skill which you are perfect, the skill which you are mastering, just mention that skills in your resume, in your biodata. So the question which you ask on the basis on your resume. So this is how you can go get your profile shortlisted, and the person which are working in this domain, just try to contact him, just ping him. If he's not responding, then also try to ping him and ask for the help. And what I see in my cases, I appear for more than 30 interviews, but in I think 30 interviews out of 30 interviews, I get rejected instead of clearing all around, because the person wants the experience. So just good enough projects which can highlight your profile, and share all the codes on GitHub, and also try to do some open source contribution, so people can recognize you that this person is really doing something. So this will also help you to get you highlighted. And anything which you are doing, just share on the LinkedIn or any platform. So this will really help. And the PPT which I made, it will be sufficient for your machine learning if you follow these things and practice your skill. Means I think you follow DSA and you practice on HackerRank or all that thing. So for machine learning, the Kaggle is the same platform. Lots of people share their work, so you can learn from them as well as try to participate in the competition, improve your rank. And if you get any good rank, then just try to share that score in your profile or LinkedIn. So you will also get fortified. And for each and every role, you just have to create alert on LinkedIn. Means suppose you're looking for the machine learning job, then just go for machine learning, create alert. So if there is any job, then on the time you're going to create the alert on your Gmail. Just go there, apply to the company. So this is how you can get the job, and no one going to stop you from your placement. It is either the job campus or on campus, and just do basic of DSA, so you don't face any problem. And yeah, so if you've done all these things, then you have a good package in your hand, and then you can enjoy your life very well. Yes, very nicely explained, Karthik. Can we have this PPT with us? Yeah, I'll just share with Neha, then she will share with all of you. Yeah. Okay. And I just had one question that what's the ground reality for machine learning engineers? Like, do they hire machine learning engineer as a fresher in the industry? And is there demand for machine learning engineer in the CS? If someone asks me if there is a demand, I will just give a simple answer. I think you are also using device WhatsApp, any app or application that consumes data and create data. Okay, so someone needs to be there who going to create the insight from the data, and
and try to improve the productivity for the company. Okay, so means whenever data is going to create, there are no limit for the machine learning jobs. You just have to be updated. Means any new thing come in this domain, you have to follow that things and work on that. And I think means fresher face little bit problem because I don't know people hire SD means fresher for SD role, but they don't hire for the machine learning. I don't know why. Means I faced this thing in my case. I rejected from 30 companies just because of experience. So just try to mention the work which you are doing. So this will really going to help. And any achievement you are doing in this field, just share with. And just do a thing. If you want the job, then just go on to the Google and just search for machine learning hire in this company, and directly follow that guy on LinkedIn and just ping him and just share your profile that I am working on this thing. So I think there are lots of chance for the fresher that by this you can directly go to the interview round. So you can follow this approach. I follow this approach, and this is how I get placed. So so that's all. So as you said that it's that companies ask for at least 3 years experience for machine learning engineers. So is it okay if we do masters in machine learning engineering and then go to job? Do they still require? Do they still hire us? Yeah, means I will just give you a small understanding on this point. Suppose you want to work in good companies like Amazon, Google, Microsoft. Only on that time they ask for the candidate with the MS or PhD. Okay, but if you do the master in machine learning, so most of the time the people going to teach you the maths behind the good how this thing work. But for the coding part, you have to prepare on your own. So what I suggest, if you want to do the masters, that is good. But parallelly, if you learn the more technical skill in this domain, then this will be more helpful than the masters. Means by the masters you will going to get the good companies. But the means I also check lecture for MIT as well as I think MIT. I think there is MIT open there, so that you can also look the lecture. I think Stanford also open school, so you can also watch the lecture. The guys are really good at that. But for miss the guy gives you some assignment, but you have to do the assignments on your own. So if you focus on the more technical skills, then there is a chance that high chance without MS you can create a very good companies. And the second thing, if you want to go for the good progress company, suppose you want to go for Google or Amazon. Means in India, I think they pay around 50 LP for Google machine learning engineer. It can increase day by day. So if you grow your skill enough and you start to apply the companies which are working in the US, you can also do as a remote job and you can get more salary than the Google and Amazon is paying in India. So for that companies, they do not ask for the MS, and there are many startups which are opening. So also they don't ask for the MS and all that thing. So you can MS is a good option, but I will say if you just focus on your skills, then I don't think there's a need of MS. Okay, thanks a lot, Karthik. It was great to hear, and there's a lot of things that I've learned today. So okay, so as stated earlier, it's gonna be a thorough question and answer session. Yeah. So the wait is over, guys, and I request our audience to put their questions in the chat box. But before that, as a host, I'll take this liberty and ask the first question to again Karthik Bhaiya. I just wanted to ask like आपने कहा था कि machine learning में आपको optimization पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. So I just wanted to ask कि machine learning libraries के optimization में ज़्यादा ध्यान देना है कि machine learning में जाकर pure mathematical intuition में जाकर पूरा सीखना है. Like आपको just मतलब in terms of suppose you are getting a very bad accuracy, then you have to retrospect that why I'm getting this. Then there are some measures by the parameter just doing the parameter you are going to get the high accuracy. So this is in the part of the machine learning. But optimize. Suppose I will just give you a small use case. Suppose अगर मतलब दिव्यांश कुरकुरे बेचता है, okay, ठीक है. दिव्यांश है the company of कुरकुरे, and for past 3 years दिव्यांश के कुरकुरे का रिस्पॉन्स बहुत ही बेकार है Amazon के ऊपर, ठीक है. So मींस people उसको मतलब 5 में से 1 ही स्टार दे रहे हैं, बराबर. और अगर दिव्यांश को अगर कुछ तो खास रेसिपी मिल गई जिसके दिव्यांश ने उसका प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट कर दिया, ठीक है. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट दिव्यांश का सेल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, ओके. एंड सपोज आप इस यूज केस पे सेंटिमेंट एनालिसिस का प्रॉब्लम यूज करना चाहते हो कि आपको देखना है कि इस प्रोडक्ट का सेंटिमेंट कैसा है, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है. सो आई विल जस्ट यूज केस इन मशीन लर्निंग. आई थिंक देयर इज अ term called 10 test bits. So we merge and shuffle all the data, and on the basis of that data we use that data for prediction.
बट अगर आपने उस टाइम पे अगर मतलब आई थिंक दिव्यांश ने उसका प्रोडक्ट का उसने क्वालिटी बढ़ाया लास्ट 1 मंथ से, तो लास्ट 1 मंथ के दिव्यांश के प्रोडक्ट का रिव्यू अच्छा जा रहा है, मतलब दिव्यांश को 5 स्टार मिल रही है, 5 स्टार मिल रही है 5 आउट ऑफ रेटिंग के टर्म्स में। बट अगर हमने अगर ओवरऑल देखा तो डिवाइस का जो प्रोडक्ट का जो रिव्यू था वो लास्ट के 3 साल से खराब था और सडनली उसका रिव्यू अच्छा जाने लगा है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि आपके पास लास्ट के 3 साल का डेटा है और जो जो डिवाइस का रिपोर्ट खराब बता रहा है और लास्ट 1 मंथ का डेटा जो डिवाइस का रिपोर्ट अच्छा बता रहा है। सो अगर आपने उसे रैंडमली शफल कर दिया और उसके ऊपर मॉडल ट्रेन कर दिया तो मॉडल को 90% डेटा जो मिलेगा वो खराब रिपोर्ट में मिलेगा और मॉडल उसका सेंटिमेंट नेगेटिव देगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा वहाँ पर नेगेटिव है। बट अगर आपने वहाँ पे टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग किया, मतलब अगर आपने मॉडल को ट्रेन किया, मतलब मॉडल को अपने डेटा पे ट्रेन किया, तो क्या होगा कि मॉडल ट्रेन होगा रिसेंटली डेटा पे और मॉडल को पता चलेगा कि भाई लास्ट कुछ डेज से उसका रिव्यू अच्छा आ रहा है, तो मॉडल वहाँ पे मिक्स आपको आउटपुट देगा, मतलब जो आउटपुट मतलब डायरेक्टली जीरो भी नहीं होगा टॉप भी नहीं होगा। सो मतलब मॉडल को पता चलेगा कि भाई देयर इज सम इंप्रूवमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंप्रूवमेंट मॉडल गिव यू द रिजल्ट्स। मतलब these are some things that which the thing you have to use where you should know. So this is a small example by which you can use the improve the accuracy as well as the real time understanding of the model. So if you know all these things, which thing do we have to do where, then you will clear and sorted. Okay, I have another question for Pratiksha, sorry, Pratima Devi. That what is the importance of DSA in placements? Hello, am I audible? Am I audible? Yes, you are. Okay, Sorry, okay. I took your name wrong. No, it's okay. It's okay. Okay, so DSA so far is very important to clear the online assessments because we know we have to clear the online assessments for appearing in the interviews. So a person needs to have a good combination of development skills as well as DSA, I would say. And you need to have basic knowledge about either of the one and strong knowledge about either of the one. ठीक है, तो it goes like कि अगर आप किसी भी एक चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हो तो प्रैक्टिस वेल फॉर इट। एंड अगर आप साथ में एंड इट डजंट मैटर, एक्चुअली मैं डेवलपमेंट में अच्छी नहीं हूँ, मैं सच बताती हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ डेवलपमेंट में, ठीक है, बट मेरी डीएसए को मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया तो जाके मतलब वो एक, अगर आप बोलोगे ना कि आप डीएसए में अच्छे हो तो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दैट, ठीक है। अगर वो आप बोलोगे कि डेवलपमेंट में अच्छी हूँ तो वो डेवलपमेंट में ही पूछेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आपको डीएसए पे कंप्लीटली फोकस करना, एज दिव्यांश सेड, दोनों में से कोई एक फैक्टर हो जो स्ट्रॉन्ग हो तो दोनों चलता है। Okay. Okay, nice. Thank you. Where do you see yourself? Yeah, so we had one question from Nikita that she asked that for becoming an engineer, coding is important. We know, but it's not everything. There are many other things as many other aspects we need to learn. So how should we start and manage doing all the things like coding and other activities? And what are the things we need to focus on? Is this question for me? Yeah. No, anyone can answer. Anyone can answer. Yeah, so you have to go at coding, but not that great. Suppose you want to focus on your development skill, so just go with development. Suppose you want to go to the AI or ML part, just do best with that part. Because I think there are different coding styles for the development as well as the machine learning and AI. So if you want to do in the development, so there is a whole different style of coding. If you want to work in the machine, so you have to just deal with the libraries and optimization part. But थोड़ा बहुत तो भाई डीएसए करना पड़ेगा, इतना तो पक्का है। उसको ऐसे थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, मतलब टोटली मैं नहीं बोल सकता कि डीएसए इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इट इज अ आइस ब्रेकर फॉर योर कंपनी. So just focus on any one skills and just master it, and parallel also try to explore another skills. मतलब काम करो, मतलब अभी आप अगर आप सेकंड ईयर में जस्ट ट्राई डेवलपमेंट, ट्राई मोबाइल डेवलपमेंट, ट्राई एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ट्राई वेब डेवलपमेंट, एंड आपको जिसमें अच्छा लग रहा है फिर आप वो वाला फील्ड चूज करो। मतलब आपको क्या होगा कि आपको हर एक चीज का फ्लेवर पता चलेगा कि आपको किस में इंटरेस्ट लग रहा है, एंड prepare for that. Yeah, so that's all. Karthik, even I would like to add something to this. Am I audible? Yeah, sure. Yeah, sure. Prathamesh. Hi, Nikita. It's a really good question. And
all the people over here, like all the speakers, have done a plethora of achievements, and I'm feeling really, a tiny bit of in front of them. Like I have done nothing in front of them, right? So, so talking about that, this is something which is my niche concept. I can talk about it, so I'm feeling really happy about it. So. The thing over here is, Nikita, that coding, being a computer engineer, is not only about coding, right? It's far more than that. Probably you can get success in coding, but trust me, your life is not about doing a job. Probably most of the people over here will be thinking that you'll be doing jobs for 3 to 4 years and then try your own hands in business and stuff. But dear, that does not work that way. Once you get into the cycle, जैसे कहते हैं ना शेर के मुंह को खून लग गया. So once you get the habit of getting salary at the start of the month, it's really difficult to get out of that. So the main thing that I will recommend is, obviously coding is important, first things first, but apart from that, focus on your development. That will really help you in the long run. Means like it's the only thing that I feel that I have done. I invested a lot in myself in the past 2 to 3 years, right? From everything, not only about coding and stuff, but I invested a lot in myself, and I feel, happy about it. I'm not regretting not doing things beforehand, right? Like one thing that I would like to share is, ये चीज जो है ना, ये चीज अब तुम सुन लोगे और सब हो जाएगा. उसके बाद कोई तो बोलेगा यार प्रतिमा दीदी ने ऐसा किया, तो फिर तुम्हें कोई बोलेगा यार प्रतिमा दीदी पहले से बहुत होशियार थी, राइट? आई हैव हर्ड दिस थिंग, और जिसने मुझे ये बोला था उसने मेरी बहुत गालियां खाया था. उसके बाद मैंने बोला था वो होशियार नहीं, उसने मेहनत की है, उसने पढ़ाई की है. यू आर गिविंग एक्सक्यूजेस, यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट शी इज लकी, she has got lucky by herself. Similarly, look at Divansh. I've seen him work hard. I've seen him work like one thing which I know about Divansh is he has earned each of these things, right? Jo bhi mila, it is not natural to him. He has earned it, right? So you're not getting lucky over here. You need to acknowledge that the other person has done it at the first place. Then only you will feel that तभी तुम ये जो बोल रहे हो ना consistency वगैरह कब मिलेगी. Consistency easily नहीं आती है. You need to attach an emotion with it, that you are progressing ahead with it, right? So ये सब सुन के बस एक चीज याद रखना कि अभी pumped up हो जाओगे, but you know, attach your emotion with it कि तुम्हें ये क्यों करना है at the first place. If getting a job is your end goal, maybe एक हफ्ते बाद तुम करना छोड़ दोगे, right? ये सारी चीजें नहीं होगी आगे तक. But if you're part of identity, right? I've been reading books for past 2 years because I feel that it's a part of my identity. वो that comes naturally to me. अगर मैं एक दिन नहीं करता हूँ तो मुझे बेचैनी फील होती है, right? So similarly it goes, like if you attach your identity with something, like अगर प्रतिमा बोलती कि she is very good at theory, she said that thing, right? And then she wanted to jump into it. So she was trying to attach a part of identity with that habit. Right, so this is how it works, I guess. So I hope that this answers your question, that you should learn a plethora of things, not just coding and stuff. Learn everything. And don't try to be best in each and everything. If Yeah. you are good enough, then that is more than sufficient. Yeah. If you focus on the quality, I have to best in that thing, then not every single thing going to work. Just get a bit understanding and just try to improve yourself. And this is the key. Yes, अगर भाई continuous बोलेगा कि भाई improving. मुझे भाई DSL में मतलब वर्ल्ड रैंक करना है, तो मतलब भाई तुम वही करोगे. मतलब किसी को मेरा पॉइंट नहीं कर रहा, बट सीरियसली जस्ट डू थिंग विद पैशन. मतलब पहले करो फाइंड कि भाई मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई दिवेश ने बोल दिया कि भाई वो स्कोप करना, तो मतलब मैं फॉलो कर रहा हूँ. मतलब सब लोग बोल रहे मशीन द सक्सेस जॉब ऑफ 21st सेंचुरी, तो आप उसके पीछे भागो. मतलब आप देखो कि आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके इंटरेस्ट में सारी चीजें मैटर करती है. किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा. सो follow the habit. One more question is there for Aman, that can you elaborate about DevOps and how to get started? By Vikrant. I'm really sorry because I still don't know what I'm going to work on. So I just applied for DevOps because I feel that it more aligns with my passion of not just being in front of desk, but also, being in management stuff. That is where I feel my passion comes from. I just wanted to share this interesting thing, right? It's not in my blood to be a day worker or in job. 15 years back, 15 or 7,
15 years back, my dad broke a record that he sold 3,000 premium credit cards in 15 days. Right. So that was something which had created ruckus in all the branches, and that made the branch head from UK to visit Pune just to see whether this is a fraudulent thing or it's in a real sense a real thing. Right. So I feel that it's not in my blood to be in day jobs. But on the other hand, coming to DevOps is basically like you are manning more of the stern of creating pipelines. To talk about pipelines, developers usually push the code, right? They create code, create software, and after that, the work not done was creating the software. Right? You have to deliver it to the client. And now, when it comes to delivering to the client, the client will come back to you asking for some risk कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ है. You need to iterate through these cycles. So इसमें कैसा हो जाता है कि अगर मैं एक डेवलपर हूँ और प्रतिमा मेरी क्लाइंट है, प्रतिमा comes to me and she says कि ये चेंजेस करने, मेरे डेवलपर चेंजेस करते हैं, एक नया बिल्ड देते हैं, एंड देन मैं फिर से वो क्लाइंट के पास देता हूँ और वो फिर से डिप्लॉय करता है. तो इसको क्या कर दिया डेवऑप्स का बेसिकली मेन एम ये है कि दे हैव टू ऑटोमेट दिस थिंग कि मैंने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया है तो आई विल डायरेक्टली एबल टू डिप्लॉय इट. इट्स अ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कि मैं डायरेक्ट डिप्लॉय कर सकता हूँ, जो मेरा क्लाइंट फिर से देखेगा और मुझे फिर से चेंजेस बताएगा. इसमें थोड़ी स्क्रिप्टिंग वगैरह आती है, बट दैट्स अगेन नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वेबिनार. So basically, if you are a fresher, don't worry about which तुम्हें वो डोमेन के बारे में ज्यादा नॉलेज होना चाहिए. A few of bash scripting वगैरह तुम्हें आती हो, थोड़ा सा गूगल क्लाउड वगैरह का भी यूज किया, then it's more than enough for you to apply for any fresher position. You don't need to have in-depth knowledge. Yeah, got it. So just one question. And suppose you are interested in development as well as machine learning, then there is the concept of MLOps also. And you can also give a shot to them. So machine learning operations, similarly DevOps. Yeah, okay, got it. So again, I'll love to ask Sparsh Bhaiya if he could answer. That Mayur asked him that currently he is in 6th sem and he's not very well introduced with CodeChef or HackerRank like platform. So is it too late to begin right now? He's asking that, and he's in 6th sem. It's never too late, I would say. And उसका सबसे बड़ा एग्जांपल दिव्यांश है हमारे सामने, उसने भी लेट शुरू किया था. And 6th sem is basically a good opportunity to start because companies ना 7th semester में आती, and ऐसा नहीं होता कि 7th में आके खत्म हो गए. Obviously कॉलेज वाले बोलते हैं कि अभी ले लो प्लेसमेंट, जो भी कंपनी आ रही है उसमें ले लो, but it's like पूरे साल चलता है प्लेसमेंट, and ऑफ कैंपस भी बहुत सारे प्लेसमेंट होते हैं, so it's never too late. बस वो है कि जब जाओ तब सवेरा, like kind of a thing. So you should start whenever you feel like you're ready, and वो अंदर से आना चाहिए, मतलब कोई बोल रहा है तो कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. So I feel it's never too late. Yeah. Okay. So one more thing I would like to add, Mayur, कि मतलब like I too realized too late, and I was also in my 6th semester when I realized that I should do coding and all. And in the month of April, I realized, and you are already 3 months before that, so all the best for that. It's never too late. Start from today itself. Okay, one question is there from Siley, open to all. Which mistake we should avoid as your junior, and also tell what regret do you feel? One thing I feel that students mostly focus on getting marks in exam. मतलब मैं भी वही करता था. But you should also try your hands in different things like web कर लो, Android कर लो, CP कर लो. फिर जो अच्छा लगे उसमें continue करो. And also don't hesitate yourself कि internships नहीं करना है या time नहीं है सिर्फ पढ़ाई करना. Internships वगैरह करोगे ना तो you'll get a lot of experience. And in most cases जो company में internship कर रहे हो वही company आपको offer दे देता है. So you should just keep yourself open to all technologies, and try करते रहो. Another question is there from Richa. That can we get the set of questions, and how do you answer to that which were asked to you in your interviews, so that after preparing on our side, we can go through that also. It would really help us.
Okay, so we will prepare one docs, and then every one of us we can add questions over there, and we'll send it on the group, right? So that will be fine. Okay. Instead Also, of you can try out Lead Code. It is one of the best platforms so far. तो उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, आपको क्वेश्चंस की कमी नहीं पड़ेगी, बहुत सारी क्वेश्चंस, आप थक जाओगे, क्वेश्चंस नहीं खत्म होंगे, तो यू कैन ट्राई आउट विद लीड कोड. इनिशियली स्टार्ट विद गीक्स फॉर गीक्स, वहां पे प्रैक्टिस के लिए है एक सेक्शन. फिर हैकर रैंक की एक इंटरव्यू प्रिपरेशन किट आती है, उस पे जाओ, और फिर उसके बाद जब आप मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हो तब लीड कोड पे जंप करोगे तो ज्यादा बेटर है. So we have one question for Karthik Bhaiya asked by Amox that what type of questions are asked in AI and ML placements, and is DSA questions asked in data science interviews? I mean, most of the first coding now is not all, is very few round place of the DSA, is not with the all companies. They just want to check your understanding of coding, so they will just judge on the small questions. And most of the question they ask on like how does algorithm work, what happen if we do this, and what is the benefit of this algorithm over this algorithm, and suppose you are using this algorithm, then what is the reason that you are choosing this algorithm. Suppose you said I will use the deep learning, so they will also ask why you are choosing deep learning over the machine learning, what are the drawbacks which deep learning overcome than machine learning. So, and I think there are some also more questions like there are some optimizers in deep learning. So they will, I think there are 4 to 5 optimizers. Then they will ask you. Suppose you ask, I'm using this optimizer. Then they will ask, what happens if we choose this optimizer over this? Then I think there are some drawbacks like some optimizer create noises there in the data. So you can how you can solve this problem of the noise. And suppose you got a very clustered data, then what is your approach that you will create a data and achieve the maximum accuracy? And most of the questions are depend on the statistics. So the interview will ask just give me the understanding what you understand by the data by the statistical focus. So on there you just have to answer the question using statistics like distribution, all that question. So if you prepare all this question very well, then you will clear the interview for sure. Yeah, got it. So this question is for Divansh Bhaiya. So Yash Mahajan is asking that good package versus better profile. What's good? And does my field of working matters? The question is good package versus better profile. तो देख भाई ऐसा होता है कि बेटर प्रोफाइल जैसे ज्यादा चूज करते हैं लोग, देख जैसे कि मास रिक्रूट में भी सेलेक्ट होते हैं ना लोग, तो वहाँ पास केप, जैसे अभी मैंने बहुत से अपने दोस्तों से बात किया तो उन्होंने केप जेमिनी और बहुत सारी कंपनीज इतना करती है कि वो आपको पूछती है, मतलब पैकेज कम देगी लेकिन पूछती है आपसे कि इन विच फील्ड यू वांट टू वर्क, बिकॉज दे आल्सो नो, कंपनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको भी पता है कि जिसमें इसका इंटरेस्ट होगा उसमें ही अपना बेस्ट देगा, और इससे हम ज्यादा काम करवा सकते हैं, ठीक है, और मजा आएगा इसको करने में, ठीक है, तो पूछते हैं, ठीक है. तो पैकेज उतना मैटर नहीं करता, ठीक है. मैं बोल रहा था उस समय कि 3-4 लाख डिजर्व नहीं करता, क्योंकि देख मेरे को क्या है कि डेवलपमेंट के फील्ड में जाना है, ठीक है, वो मेरे को मास रिक्रूटमेंट में मिलेगा, और बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जिसमें अभी हूँ, खैर और भी बड़ी कंपनीज अभी आ रही हैं उसमें भी मिलता, ठीक है, लेकिन 3-4 लाख मैं डिजर्व नहीं करता उतना, क्योंकि मेहनत किया है, तो पता था खुद को कि भाई इतना तो नहीं करता, ठीक है. और प्रोफाइल में अगर तू अच्छी प्रोफाइल में काम करेगा तो ये रहेगा कि तू कभी बोर नहीं होगा, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, यार परेशान हो गया यार काम नहीं करना है, ऐसा वो नहीं होगा, या फिर तेरा एफिशिएंसी कभी कम नहीं होगा, ठीक है. पैसा देखेगा, चल ठीक है पैसा मिल रहा है, अरे उड़ाने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से क्या करेगा पैसा लेके, हाँ पैसा उड़ाने का टाइम नहीं मिलेगा क्या करेगा. बहुत से लोग कभी है मैकबुक लेना है यार, अबे काम टाइम ही नहीं मिलने वाला है, तेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा, अभी एक काम खत्म हुआ, टाइम भले ही तेरा 8 आवर्स का वर्किंग डे खत्म हो गया है, अब तू वो तेरे को काम देंगे तो तू बोल नहीं सकता ना कि नहीं आज नहीं करूंगा सर, अगर चल नहीं भी करेगा और एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ चल ठीक है नहीं करवा सकते, ठीक है. क्या हुआ? कुछ हुआ क्या, किसी को बोलना है कुछ? नहीं तो बोल स्कैम हो गया, तू बोल कंटिन्यू कर, कोई तो भी चिल्ला दिया तेरे पे, ध्यान दे, इग्नोर कर, तू कर कंटिन्यू कर. ठीक है, तो देखो जैसे कोई मना भी करता है, आप मना भी कर दो अपने मैनेजर को, बट ठीक है वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस वो आपसे काम नहीं करवा सकते, ठीक है, पल के मान भी लिया लेकिन आपका इंप्रेशन तो खराब हो गया,
एटलीस्ट वो इंप्रेशन में ध्यान रखते हुए फिर आपको काम करना पड़ेगा। तो पैकेज का उतना मत रखो, पैकेज अगर कोई ज्यादा दे रहा है तो काम करवाएगा, ठीक है। तो अगर प्रोफाइल और पैकेज दोनों अच्छा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे प्रतिमा को काफी अच्छा प्रोफाइल एंड पैकेज तो अच्छा मिला ही है, ठीक है। और मैं भी अपने पैकेज से काफी सेटिस्फाइड हूँ और मेरा प्रोफाइल काफी अच्छा है, ठीक है। तो पैकेज का उतना मत देखो, प्रोफाइल का देखो, ठीक है। प्रोफाइल इज द बेस्ट थिंग यू शुड फोकस ऑन। Okay, so we have one question for Pratima and Neha, that development and competitive programming, what's the correlation and what's the ratio in which they go together except the first round for interview? Neha and Pratima. ओके सो मेरी बात करूँ तो मैंने लाइक कोविड में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, मतलब करना कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट क्या होता है, बट देन विद इन 2 months लाइक आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट। एंड फिर उसके बाद फिर मैंने कोर फंडामेंटल्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स पे फोकस किया, तो मुझे ज्यादा डेवलपमेंट का आइडिया नहीं है। एंड ऐसे नहीं है कि यू शुड डू बोथ ऑफ देम, एज प्रतिमा सेड any one of them is good, but उसमें perfect होना चाहिए, right? जैसे अमन is good at development, प्रतिमा is good at coding, right? तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि we should know both of them. So I think any one of them is fine, but उसमें we have to excel, like go towards that direction. एक्चुअली मेरा भी सेम एक्सपीरियंस था नेहा की तरह। जब मैं घर पर आई थी मैंने डेवलपमेंट शुरू किया एंड मेरा इंटरेस्ट नहीं बैठा, मतलब मैंने किया मगर मेरा इंटरेस्ट नहीं बना इतना। तो फिर जब मैंने मतलब कोडिंग करने की शुरू की तब मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट इसकी तरफ ज्यादा है, तो मैंने अपने आप को पूरा उसमें एंगेज किया। और डेवलपमेंट जो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत किया था वो ठीक था, अदरवाइज इतना नहीं है मुझे भी डेवलपमेंट का नॉलेज। जिसमें आपको इंटरेस्ट बैठता है दोनों करके देखो, जिसमें इंटरेस्ट बैठता है उसके लिए जाओ। Yes, absolutely. Also, somebody was asking how to control their nervousness just before the interview. अरे मतलब क्या हो गया, हो के क्या होगा, सिलेक्ट नहीं हो गया यार, खत्म। That's it. That I feel is natural and Yeah, that मैं is too natural. Too natural. एक्चुअली मैं तो ये सोच के बैठी थी कि मैं 101% नहीं होने वाली हूँ, तो ऊपर से मेरा माइक भी बंद हो गया तो नर्वसनेस तो बिल्कुल ही उड़ गई थी इंटरव्यूअर के सामने। तो नर्वसनेस कुछ नहीं, एक बार जब इंटरव्यूअर इंटरेक्ट करने लगता है तो वो अपने आप ही चली जाती है, इतना कुछ इशू नहीं है, वो सबके साथ सेम रहता है। एक्चुअली आई वुड लाइक टू शेयर वन एक्सपीरियंस कि जो क्रेस्ट डेटा सिस्टम्स में मेरा पहला इंटरव्यू था वो, तो उसमें जब देने वाले थे तो उसके पहले नाइट वी वर थिंकिंग, मैं अमन और 2-4 लोग हम सोच रहे थे कि भाई ये कंपनी अभी तक पुणे में नहीं बनी है, हमें गुजरात शिफ्ट कर देंगे, गुजरात बेस्ड कंपनी है। तो हमने यही सोच के मतलब हम गए थे कि भाई नहीं देना है, मतलब हमने रात में तो सोचा था कि नहीं करना ही नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं करना। तो बट प्रॉब्लम ऐसे कि अपने कॉलेज का ये रूल है कि अगर इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू एंड इफ यू डू नॉट अटेंड तो फिर आपको डिबार कर देंगे प्रोसेस से। तो देना तो था, पर हमने ये डिसाइड किया था कि गंदा देंगे एकदम इंटरव्यू, मतलब पूरे गलत आंसर देंगे ऐसे वैसे। तो फिर नर्वसनेस की ये ही नहीं आई यार, फील ही नहीं आई, वैसे भी गलत ही बताना था, बट ठीक है यार, हो गया एनी हाउ। तो फिर डोंट थिंक अबाउट इट, टेक डीप ब्रेथ्स एंड जस्ट गो फॉर इट, डोंट थिंक अबाउट इट। And Pratima and Neha, can you just answer this question that Ritik asked, that what roadmap should we follow in order to be a developer? डेवलपमेंट में इतना एक्सपीरियंस नहीं है यार, डेवलपर तो अभी बनना है, मतलब अभी तो प्रोफाइल असाइन किया, अभी सिखा रहे हो। सॉरी टू इंटरप्ट नेहा, यूट्यूब पे डाल दो, रोड मैप नहीं तुमको लाइक इंसाइक्लोपीडिया मिल जाएगी, राइट फ्रॉम गूगल से माइक्रोसॉफ्ट, अनुज भैया, बबलू भैया, सब मिल जाएगा, श्रद्धा दीदी, सब है। So my question is for Aman, that someone asked, in upcoming Web 3.0, what will be the challenges? Is it will be easy or get thing more messy? Okay, so again, answering to this question, I'm not a Web3 expert 3.0, but I do invest in cryptocurrencies and stuff. The thing is, this is a very big opportunity for entrepreneurs and people who are thinking more of an business side, right? Because, just before Facebook had created its niche market,
right? Just because the dot-com bubble, if you have studied about it, dot-com bubble, there was plethora of investment coming into internet. Everyone wanted to shift into the internet. Similarly, when the dot-com bubble, crashed, after that, there was a plethora of investment coming into real estate and gold that led to 2008's crash of the market. Similarly, right now, there is a lot of hype around Web3. And this directly means that there will be enormous amount of investments coming into Web3, coming into crypto market, basically. And this is going to crash eventually. But this is the golden opportunity for people, those who want to jump into it. So, things are going to get messy, but this is an opportunity for people, those who are interested to earn few bucks, quick bucks, make another unicorn out of it. Another question is coming from Ashok. How can we face for a placement even if I don't know a lot about coding? Okay, so I'd like to answer this. So whenever you're going to go into an interview, be frank with what you know and what you don't, because वो पकड़ लेते हैं यार. Like, don't tell कि मुझे ये आता है if you don't know that. So that is the main thing. If you don't know coding, then tell him or her that मुझे नहीं आता. So they'll probably focus on a different aspect. और also उनको ये भरोसा दिला दो कि you are ready to learn if you train, like if they train you. Okay, so this might help. ऑल्सो एक पॉइंट ऐड करूंगा अशोक, अगर कोडिंग अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, एक काम कर, एटलीस्ट थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा रख, ठीक है? मतलब वो क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? और पहली बात तो ऑनेस्ट होना, जैसे नया ने बोला कि कुछ भी झूठ नहीं बोलना, ठीक है? वो पकड़ लेंगे. एटलीस्ट कोडिंग अच्छा नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा रख. पता है ये सब डीएसए के जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, वो थ्योरेटिकल उनका पार्ट क्या क्या है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी, मतलब जितने भी थ्योरी वाली पार्ट होते हैं ना, एटलीस्ट वो स्ट्रांग रख. क्योंकि मैंने बोला ना, एक लक फैक्टर होता है. मान ले कोडिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि इंप्रूव कर, फिर भी भले अच्छी नहीं है, ऐसे बोलने से नहीं चलता है, इंप्रूव कर. अगर निकल गया फर्स्ट राउंड तो तेरा थ्योरी स्ट्रांग रहेगा ना, तो एटलीस्ट वो कुछ भी पूछेंगे तो उनके आंसर्स एग्जांपल्स के साथ इंप्रेसिव आंसर दे सकता है. तो जितना अच्छा आंसर देगा तो उसका इम्पैक्ट उतना अच्छा पड़ेगा. तो थ्योरी एटलीस्ट अच्छा रख. To add to this, sorry, I'm interrupting you, Divansh. मेरे views थोड़े contradictory in सबसे, but to get placed, okay, but to get placed into a company is really easy. अगर तुम target ज़्यादा रखते हो तो it's difficult, but to get into a company which is a mass recruiter, trust me, 3 हफ्ते की ट्रेनिंग, 3 हफ्ते की मेहनत, that too not regular. 3 हफ्ते तुमने 2-2 घंटे, 3-3 घंटे किया, you are in. मास रिक्रूटर है भाई, सबको उठाता है. तो so just don't stress too much about it, because कुछ लोगों के लिए 4 लाख का पैकेज is really good and कुछ लोगों के लिए it's not. कुछ लोगों के लिए 30 लाख का पैकेज भी कम पड़ जाए, right? So if you are like मैं कोडिंग में वगैरह नहीं हूँ, I'm not mocking someone, but मैंने देखे हैं लोग जिनके काफी बैक थे, right? एक हमारे बहुत ही बढ़िया सीनियर है शिवम करके, वो भी प्लेस हो गए थे, राइट? कंप्लीट बिजनेस, कोई कोडिंग से ऐसा एकदम दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं, बट पर्सनली इज अ रियली गुड पर्सन, बट ही आल्सो गॉट प्लेस्ड. एंड दिस इज समथिंग कि अगर तुम्हें टारगेट नहीं है तुम्हारा कि तुम्हें 6 लाख चाहिए तो थोड़ी कोडिंग ज्यादा करना, तुम्हें 4 लाख चाहिए तो जिंदगी मजे में करो, ऐश करो, 3 साल है ऐश करो, और जब लास्ट साल में आओगे 1-2 महीना अच्छे से पढ़ना, प्लेस हो जाओगे. और फिर प्रतिमा दीदी जैसा कुछ करना है तो फिर मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी. Yeah. So I have this question for Sparsh Bhaiya, asked by others. So he says, so I started doing DSA, but still I didn't get the approach to solve the problems. So will you please elaborate on this more? Means what should I do more? He's asking. Like he doesn't get the approach how to solve the problems. अप्रोच नहीं आ रहा तो पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करना चाहिए. तो लॉजिक अगर नहीं बन रहा है तो कोड आप कैसे भी लिखो वो होने नहीं वाला. एंड यहाँ पर प्रतिमा है,
दिव्यांश है, इन्होंने काफी इस पे काम किया, तो आई थिंक दे वुड बी द बेटर पर्सन टू आंसर दिस। ओके सो अगर नहीं बन रहा है तो लगे रहो कॉन्टिन्यूसली करते रहो। नहीं हो रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे जब थक हार की कोड देखो, क्योंकि आपने उसको एक्सप्लोर कर लिया ना बहुत ज्यादा, मतलब पढ़ लिया उसका एक एक पार्ट, आपको समझ में आ जाएगी कहाँ आपकी थॉट प्रोसेस में गलती हो रही है। ठीक है, तो एक बार आपको पता चल जाएगा तो नेक्स्ट उसके बाद जब आप कोड देख लेते हो, नेक्स्ट टाइम जब सुबह मॉर्निंग में उठ रहे हो एक बार खुद करो, उसे दोबारा से करो, देखोगे कि लॉजिक बनेगा। ओके और इतनी आसानी से नहीं होता है, बहुत 5-5 दिन भी लग जाते हैं, बहुत बहुत डिफिकल्ट है ये, इतना आसानी से नहीं होगा। और एक और पॉइंट, जैसे प्रतिमा ने बोला कि पूरा क्वेश्चंस देखो और दिन भर करो और एट द एंड ऑफ द डे उसको देखो, तो मतलब जब इतनी मेहनत कर ली, इतना एक्सप्लोर कर लिया है ना, तो काफी कुछ तो नॉलेज आ ही गया इधर उधर, भले ही ओके एक्यूरेट आंसर नहीं पता था चला, कुछ समझ में नहीं आया, आंसर देख लिया। अब उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो, लिखने की हैबिट डालो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव में लिखो। और सबसे बड़ा की फैक्टर होता है हर दिन रिवाइज करना, ठीक है, धीरे धीरे लिखते जाओ, रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा जो पहले लिखा था एकदम पहले, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा, वो तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो की फैक्टर ये होता है कॉम्पिटिटिव में कि लिखो और उसको हर दिन रिवाइज करो, सबसे बड़ा की फैक्टर रिवीजन। ओके इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, लॉजिक की बात आई है तो एक क्वेश्चन था जो मुझे पूछा गया था, एंड मतलब बहुत सोचा था मैंने इसके बारे में बट हुआ नहीं था, तो मैं वो पजल है वो एक्चुअली। तो फिर मैं आई लाइक टू आस्क ओवर हियर, एंड अगर 2-3 मिनट में अगर किसी का सुपर ब्रेन है एंड दे कैन आंसर, देन प्लीज प्लीज डू दैट। तो द पजल इज गोज लाइक दैट कि दो रोप्स है, एक का थिकनेस बड़ा है एक का छोटा है, ठीक है, एक पतली है एक मोटी है, एंड ईच रोप takes 1 hour to completely burn itself. Okay, तो आपको अगर आपके पास ये ही 2 ropes है and you want to gauge 45 minutes out of that, so how would you do that? Like if anyone wants to unmute themselves and answer, then they can. Can you just repeat the question, Neha, once Yes, again for yes, sure, everyone? sure. So 2 ropes है, ठीक है, एक मोटी रोप है एक छोटी पतली सी रोप है, बट दोनों रोप्स को अगर हमने आग लगाई एक साइड से तो उसको कितने 1 आवर लगेगा एक को पूरा जलने के लिए, एंड दोनों को मतलब उतना ही, बिकॉज लेंथ डिफरेंट है दोनों की। ओके, एंड आपको टाइम मेजर करना है, 45 मिनट्स का टाइम मेजर करना है, तो आप वो कैसे करोगे? लाइक इफ यू हैव ओनली दोज रोप्स एंड माचिस की स्टिक जलाने के लिए, so how would you do that? हम लोग एक काम कर सकते हैं कि एक रोप को दोनों साइड से जला दे एंड एक रोप को एक रोप दूसरे रोप का मिड फाइंड करके 3 तरह जगह से जलाएंगे। Okay, so we cannot we cannot measure the length कि इधर half है ऐसे। सबसे पहले एक sorry guys, I'll have to leave now. There's some urgent gathering that I have to. No problem, yeah, sure. Yeah, thanks a lot. Thank you, man. Bye bye. Thank you, Aman. सबसे can I answer? Yes. जैसे सबसे पहले एक रोप को एक साइड से जलाएंगे, उसके बाद उसका पूरा जल जाएगा, उसके बाद जो दूसरी रोप है उसको दोनों साइड से जलाएंगे तो उसका आधा टाइम आता है। But 1 घंटा और हाफ 1.5 आवर हुआ ना ये? थोड़ा नहीं सॉरी, क्योंकि वो जो दोनों एंड से जला रहा हो तो पहले चलेगा ना, दोनों एंड से जलाना है। हाँ, दोनों एंड से, एक रोप को शायद दोनों एंड से जलाना है और दूसरे रोप को एक एंड से जलाना है, तो जो पहला रोप होगा जो दोनों एंड से जल रहा है वो जल जाएगा, ठीक है, तो जैसे ही जल जाएगा वो शायद उसके बाद जो दूसरा रोप था जिसमें हमने एक एंड से आग लगाया था, एक्चुअली तीन साइड से एक साथ जलाना है, मतलब दो एक रोप को दोनों साइड से जलाना है और दूसरे रोप को एक साइड से जलाना है, तो लाइक एक रोप पूरी जल जाएंगी तब जो दूसरा रोप है उसको दूसरे साइड से भी जला देना है, इफ यू गेटिंग दैट पॉइंट। ओके, मतलब जो दोनों पॉइंट से एंड पॉइंट से जलाई है वो हाफ एन आवर में खत्म होगी, बराबर? यप, हाँ। या तो फिर एंड देन जो बाकी हुई बची हुई जो रोप होगी, जो
जैसे आधा घंटा गुजर गया और एक रोप आधी बाकी है, जो दूसरी रोप है वो आधी बाकी है और मैं दूसरी साइड से भी जला दूं, तो फिर वो 15 मिनट हो जाएगा। Perfect. Amazing. So the questions are asked in interview also. So मतलब इन क्वेश्चन में चाहिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए भले टाइम लगता है, बट अमेजिंग ओम दिव्या। मैंने क्वेश्चन पूछा था, कैन यू आंसर? What? Actually, I asked one question, so can you answer that? What's the question? What is your question? Like I'll say that question कि मैं अभी मतलब first year में हूँ, तो I just completed my basics of C++ and like my friends are from different colleges, so they say that you do now now you do web, and then in the second year when colleges start DSA, then you would do DSA with them. और थोड़े लोग कुछ और बोलते हैं, तो what should we do? I mean, how should we approach it? Any advice? So what do you think you like to do? Like development करना, या तुम आपको experience ही नहीं होगा ना? नहीं है वही, मतलब मैंने वेब ट्राई किया, बट इट इज लाइक वो मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि CSS HTML तो स्कूल में ही सिखा दिए थे, CSS मैंने सीखा बट HTML स्कूल में सिखा दिए थे एंड समथिंग लाइक दैट, तो आई एम मोर लीन्ड टुवर्ड्स CP। एक पॉइंट बोलूं, देख तू फर्स्ट ईयर में है ना, तेरे पास अभी बहुत टाइम है, स्ट्रेस कुछ है नहीं, ठीक है? तो तू चाहे तो देख मैनेज हो जाता है, तू चाहे तो अभी C++ पढ़ा है, देख फर्स्ट ईयर है, बहुत टाइम है, कॉम्पिटिटिव भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, डेवलपमेंट कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ दोनों कर सकता है, काफी टाइम है। तो अभी C++ पढ़ा है तो कॉम्पिटिटिव में कूद सकता है, चलो थोड़ा सा ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है? पढ़ लिया हुआ क्या, पढ़ा है क्या? अभी नहीं होगा रे, फर्स्ट ईयर में तो सारे तो एक काम कर, तू अपने से शुरू कर, ऑनलाइन तो क्या रिसोर्सेज बहुत है, ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़, ठीक है? बेसिक लेवल पढ़ेगा तो ठीक है, एटलीस्ट क्लास में पढ़ाएंगे तो तेरे को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और खास बात तो ये कि तू डाउट पूछ सकता है कि तेरे अब तू पहले से पढ़ा है और तेरे मन में कुछ डाउट है, मैम सामने है, मैम से पूछ ले सकता है, ठीक है? और उसके बाद फिर क्या कर सकता है तू, बेसिक लेवल के मतलब वही कौन से कोड शेफ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं एकदम बिगिनर लेवल के, मतलब उसमें क्या एडिशन होता है, तो एटलीस्ट तेरे को सिंटैक्स विंटैक्स थोड़ा और क्लियर हो जाएगा अपने से, ठीक है? तो वहां से शुरू कर सकता है। दिन का अगर तू एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, तो भी एट द एंड थर्ड या फोर्थ ईयर तक छोड़ना नहीं है, ठीक है? कॉम्पिटिटिव छोड़ना नहीं, अगर तू कंटिन्यूअस थर्ड या फोर्थ ईयर तक करते रहा तो तू मास्टर बन जाएगा भाई, समझ गया? मास्टर, और वो जब तू वो बन गया ना तो फिर तू तो भाई मतलब यहाँ पर कोई भी जितना भी लगा है ना सबका, शायद तू फोड़ सकता है, ठीक है? छोड़ना है नहीं। ऑल्सो एक और चीज, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो दिस वन बुक हेल्प मी अ लॉट एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू टू। तो दिस इज एन अमेजिंग बुक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ बाय E बाल गुरुस्वामी। सो ट्राई आउट दिस बुक, मतलब आपका पूरा ये पैकेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ये अगर किया ना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। So Ravi is also asking a question like what we can do for good placement from first year. He's in a first year के audience ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। फर्स्ट ईयर से कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए? अभी अब जैसे बोला ना कि फर्स्ट ईयर में काफी टाइम होता है, कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, तो करने को तो दोनों कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव भी डेवलपमेंट भी। कॉम्पिटिटिव मैं बोल रहा हूँ ना, एक दिन के एक भी क्वेश्चन कर लिए ना तो काफी है, मतलब लेकिन छोड़ना नहीं कभी कि आज छोड़ देते हैं, आज संडे है, ऐसा नहीं। और रोज रिवाइज करने का बोला था ना, तो वो कर सकते हो। डेवलपमेंट में देखो, डेवलपमेंट कॉम्पिटिटिव से काफी ईजी होते हैं, क्योंकि देखो टर्म्स कुछ इंग्लिश होते हैं और आपको डेवलपमेंट में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता खुद से सब कुछ आएगा, एक माइंड में एक सबकी थ्योरी है कि यार बिना देखे करना, बिना वो डेवलपमेंट में शुरुआत में भाई देखना पड़ता है, थोड़ा गूगल करना। अभी भी कोई भी 1-2 साल से काम कर रहा होगा इंडस्ट्री में, वो भी गूगल करता होगा, ठीक है? मैं तो करता हूँ, ठीक है? गूगल करना पड़ता है, वैसे ही सीखते हैं, वही तरीका है सीखने का। तो गूगल करो, थोड़ा बहुत सीखो, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, ऐसा। तो डेवलपमेंट में भी अगर तुम दिन के 1 या 2 घंटे कुछ अगर किसी को करना है, तो वैसे वेब डेवलपमेंट में जनरली लोग यूआई से शुरू करते हैं, फ्रंट एंड से शुरू करते हैं, क्योंकि इजी होता है, ठीक है? और एंटर भी कर जाते हो आप उस फील्ड में, फ्रीलांसिंग कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए ठीक ठाक तो। एक्चुअली एक और चीज कि
मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में हो ना तो ऐसे नहीं है कि डेवलपमेंट और डेटा स्ट्रक्चर्स यही दो चीज है. यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स बिकॉज ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है वो बहुत बूमिंग है अभी. मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है. दीज टेक्नोलॉजीज आर रियली अमेजिंग एंड ये ट्राई आउट करो क्योंकि यही टाइम है. आपको बाद में कैसे होगा कि हाँ प्लेसमेंट का प्रिपरेशन करना एंड फिर बाद में कंपनी जो हमें काम अलॉट करेगी वही करना है. सो ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स आई वुड से. आपका थॉट प्रोसेस नैरो हो जाएगा. मतलब जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको एक पर्टिकुलर चीज ही पढ़नी पड़ेगी, वही पढ़ना ही पड़ेगा. तो फर्स्ट ईयर सबसे बेस्ट होता है. नया से बोल रही है एक्सप्लोर कर सकते हो. प्लस एट द एंड ऑफ द मतलब जब अभी फर्स्ट ईयर में अगर आप ये सब एक्सप्लोर करोगे ना तो आप रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो. जब आपका कोई रिज्यूमे देखेगा तो वो देखेगा तो अच्छा लगेगा यार ब्लॉकचेन भी किया है, ओके ये भी किया है, मतलब ये फैमिलियर है यार, इसको डाल सकते हैं. तो सोचेंगे नहीं कि हाँ भाई इसको हायर करना है कि नहीं. इसके मतलब ये वो भी समझ गए कि यार ये हैबिटेबल तो है, कुछ भी डालो ये सीख तो लेगा क्योंकि इतने सारे में काम किया है. तो गुड इंप्रेशन क्रिएट करता है. तो आप फर्स्ट ईयर का सबसे बेस्ट टाइम है ये सब करने का. Also, can I add one more thing in this? परमिशन होगा तो. So, ओम, जो तूने पूछा था ना डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव वाला और डीएसए वाला स्पेसिफिकली, तो कॉम्पिटिटिव अगर तू डेवलपमेंट करेगा ना इनिशियली, सो उसमें एक स्कोप होता है फ्रीलांसिंग वाला. सो व्हेन यू स्टार्ट ऑफ विथ फ्रीलांसिंग यू स्टार्ट अर्निंग मनी एंड वंस यू स्टार्ट अर्निंग मनी देन यू लाइक गेट ग्रेडी. जैसे अमन ने बोला था कि हिस्सा मतलब एक बार पैसे आना शुरू हो जाता है तो ऐसा लगता है कि कब और आएगा और आएगा. सो वो चीज होती है और उसके वजह से काफी चीजें जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है. एंड सो आई वुड रेकमेंड स्ट्रांगली कि स्टार्टिंग ऑफ विद डीएसए फर्स्ट एंड देन डीएसए एज इन की लॉजिक बिल्डिंग एंड देन डूइंग डेवलपमेंट. ऑल्सो डीएसए से फायदा ये होगा कि तेरा जो लॉजिक डेवलप होगा फिर बैक एंड स्ट्रक्चर करने के लिए एंड ऑल इट विल हेल्प यू अलॉट. पर्सनली मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने इससे स्टार्ट किया था डेवलपमेंट के साथ एंड आई फेल्ट कि मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि आई फेल्ट इट क्वाइट डिफिकल्ट लाइक टू ट्रांजिट फ्रॉम डेवलपमेंट टू डेटा स्ट्रक्चर्स और लॉजिकल थिंग. सो दैट इज वन थिंग आई वुड रिकमेंड. Also, I would like to add one thing कि कोडिंग कर ली, डेवलपमेंट कर लिया, सीपी कर लिया, सब कर लिया, थोड़ा कम्युनिकेशन पे भी काम करो. बिकॉज कुछ कंपनीज में ऐसे कम्युनिकेशन राउंड्स होते हैं तो उसमें से भी एलिमिनेशन हो जाता है. सो वो चीज़ों पे सॉफ्ट स्किल्स पे थोड़ा काम करो. एंड किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि इंग्लिश में इंटरव्यू करना चाहिए क्या. तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू गो अहेड विथ इंग्लिश क्योंकि नहीं तो कम्युनिकेशन वीक है बोल के निकाल देंगे. तो दैट शुड नॉट हैपन. वो भी ध्यान रखो. और एक क्वेश्चन है मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत, लेकिन आंसर करना थोड़ा अच्छी बात होगा. देव है कोई पूछ रहा है कि थोड़ा बहुत हायर स्टडीज का पूछ रहा है ना, मतलब आउट ऑफ फॉरेन क्यों नहीं गए वो सब. तो देव इसका सबसे बेस्ट आंसर तो खैर तन्मय या फिर तन्मय दे सकता है क्योंकि ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर हायर स्टडीज. और मैं गया नहीं, एक्चुअली मैं भी प्रिपेयर कर रहा था हायर स्टडीज के लिए फर्स्ट ईयर में, जीआरई के लिए, सैट के लिए, टॉयफेल, आईएल्स. बट एक फैक्टर आता है ना मनी का, तो वो भाई मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. तो एट द एंड मैं प्रिपेयर कर रहा था फर्स्ट ईयर, पूरा प्रिपेयर किया था सबके लिए, ठीक है. थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में एग्जाम देता मैं आईएल्स का, बट वो फर्स्ट ईयर में ही प्लान वो मेरे फादर ने कैंसिल कर दिया कि अभी हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते और बाहर जाने का खर्चा काफी होता है, ठीक है. तो इसके वजह से ठीक है. बाकी अगर तेरे को कुछ और डिटेल्स जाननी है अगर हायर स्टडीज के लिए, तब मैं बेस्ट आंसर दे सकता है क्योंकि वो प्रिपेयर ही कर रहा है, तो बेस्ट आंसर दे सकता है वो. Okay, guys, indeed, it was really nice. Yes. क्या बोल रहा है प्रथमेश? So thank you speakers. We had a great time today and learned a lot of things today. And at last, I just want to say that we have dropped the LinkedIn profiles of every speaker in the chat box, so you can connect with them on the LinkedIn, and also just fill the feedback form, guys, and feel free to share your views on feedback form. Just don't forget to fill it. Yeah, you can proceed. Yes, and also I want to say one thing that DSA event हम एक organize कर रहे हैं अभी, तो उसकी भी registration link अभी समीक्षा और कोई तो भेज देंगे chat section में. तो we are hoping for the positive responses from you all. Participate करना, and I think already we are running out of time, so Q&A का stop करें अभी.
Also, I guess Vaibhav had something to say. So let him speak up, okay? Vaibhav had something to say. Yes, Vaibhav. Okay. Yeah, thank you, Tanmay. First of all, my name is Vaibhav Pawar. I'm from second year computer department. And first of all, congratulations to all of you guys for your amazing and outstanding achievements. And thank you so much for your words of wisdom and sharing your experiences. They're really helpful and inspiring, and at the same time, awakening for someone like me. So as of now, you guys know how DSC is important and how it's going to help you for your coding skills and placements and all stuff. So the good news for you guys is CSI in collaboration with ACM and AISA is organizing a 10-week long event for helping you to in event they'll be giving questions. Weekly questions will be there, and there will be a weekly test on a platform, Hacker Rank, so which will help you to clear all your concepts. All the questions will be designed as to help for your placement and to improve your DSA knowledge. So guys, do register for the event. And also, I would like Yash to give further details about the event. Yes, thank you, Vaibhav. At last, I would like to request our Secretary of ACM, Aditya Phattare, to present us with a vote of thanks. Also, one more thing is left, Vaishnavi. Sorry to interrupt you again. So, AIDS students have organized one event, so wherein they have collaborated with NIT Bhopal students, and they have brought you a comparative coding, like an experience kind of an competition. So do register for that as well. I will just send those link in the chat box. You can go through the website. It is quite self-explanatory. Now back to you, Vaishnavi. I'm sorry to interrupt you. No, go ahead, Aditya. Yeah. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah, so it has been such an honor to be part of this wonderful event. So on behalf of ACM Students Chapter DYPMR in association with CSI and Department of Computer Engineering, I would extend my heartfelt gratitude to our esteemed speakers, Karthik, Sparsh, Pratima, Aman, Neha, and Divyansh. And sincere thanks to the heads and the organizers for the wonderful planning and execution of the event. A wide round of applause and thanks to all the participants who made this event a memorable one. Finally, I would like to thank all of you present here for making the time to be with us today and helping us to make this grand event a success. So thank you one and all. And like we are wrapping it up. Thank you everyone for joining. It was really an amazing evening with you all. And also, if you have any questions which were not answered in this session, you can ping us on our LinkedIn accounts. And ऐसे नहीं है कि बस हमें ही करना है. There are a lot of seniors like Tanmay is here and many others. So you can ping any one of us, and we are ready to help you. Thank you so much once again for joining. Yes. If there are any questions, please put it in the chat box. Just do one thing. Just create a Google form. If anyone want to ask some questions, they can put question in the form. Then we will try to reply them separately or next time. And yeah, I just want to say a big thanks to ACM and CSI Club for inviting me as a guest speaker to this session. I'm looking forward to more such sessions and more such interactions with all the juniors back at college. Thank you. Thank you, Sparsh. It was great talking to you, and your experiences were amazing. Also, guys, we have added this extra question in that feedback form. So if you have any question, then you can just fill the feedback form, and then at the end you can add your question in there. So Tanmay, do we have to stay back or like can we leave the meeting? Just for a couple of minutes.
Okay. So I request you all to fill the feedback form, and you can start leaving the meeting right now. Just a second. So, speakers just on the camera and the organizers for a photo. Like, can we have a group photo? Yes, we left that. The most important thing, right? Yes. So those who Tanmay, can you click the you click the yeah, photo. sure. So if possible, everyone can turn on their camera. तो ऐसा पूरा विंडो भरा भरा दिखेगा. So जितने भी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा. हम्बल रिक्वेस्ट. गाइस कैमरा चालू कर दो. अच्छा ठीक है चलो. I will take a Speakers, ready? speakers on the camera. Yeah, I guess everyone, each and every speaker has. Fine. Ready? Say cheese. Cheese. Done. Thank you guys. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you all. Thank you for joining. Cool. Committee member, just wait for a few moments, okay? I request remaining people to leave the meeting. Okay, so I guess only committee members are here, right? Yeah. Yes. Okay. So, so Sparsh Bhaiya, Karthik Bhaiya, how was the session? Even Neha and Pratima, how you guys felt? Yeah, it was a great one. And first of all, before everyone say anything, kudos to Prathamesh and Vaishnavi. Guys, you did an amazing job. Super. To be very honest, you outperformed. Like, I was not expecting this kind of anchoring from you guys. You did such an amazing job. So I want to clap for you guys. Yeah. Also Samiksha, Nikita, Yash, आपने भी बहुत मतलब like outstanding performance. मतलब उन्होंने सब arrange किया, like they are from second year and everything was done by them, including the messages, the scripting. Oh my god, Even super, poster like making. super. So Poster making from- was done by Uday. मतलब यार मैं शॉक हो गई यार, हम सेकेंड ईयर में क्या ही करते थे. बस ये अभी आगे भी कंटिन्यू करना. सेकंड ईयर से कर रहे हो तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में छोड़ मत देना. क्लब को आगे लेके जाओ. एक्चुअली नहीं यार, मतलब अमेजिंग. एक्चुअली स्क्रिप्ट थोड़ी लिखी अलग थी और उसका फ्लो जैसे आप बोल रहे थे अलग ही जाएगा, तो वो वैसे ही हुआ. बट आपका जो एनर्जी था ना दोनों का, लाइक इट वाज अमेजिंग. मतलब लग रहा था कि यू आर इंटरेस्टेड टू होस्ट, नहीं तो कैसे रहता, मोनोटोनस नहीं लग रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल. तो सुपर यार. कैमरा ऑन करो अपना. और पता नहीं कौन तेरा बंदा देखा नहीं आपको किसी को. सो जस्ट ऑन द कैमरा सो वी विल लेट नो. यस निकिता, समीक्षा, कम ऑन, आदित्य. अरे एक्चुअली मेरा थोड़ा वाईफाई इशू हो रहा है, इसलिए मैं 5 मिनट में रिजॉइन करती हूँ. ओके, नो प्रॉब्लम. तब तक शायद मीटिंग भी एंड हो जाएगी समीक्षा. एंड एक चीज मैंने नोटिस की कि यार बहुत टाइम के लिए अराउंड 180 पार्टिसिपेंट्स थे, उसके बाद थोड़े कम हो रहे थे. लाइक दैट वाज, I guess we reached the peak of 215. Yeah. Yes. About स्पर्श क्या है? स्पर्श क्या?
Yeah, specials here. I was. भाई सुना, मतलब जब हम फर्स्ट ईयर में थे हमारे, तो मतलब किसी ने कुछ ऐसा इवेंट किया होता तो मतलब बहुत सारे बंदे जगह पर प्लेस हुए होते तो हमारे टाइम पे FCL ने बहुत लोगों को डूबा है भाई। मतलब तब हमारे टाइम पे कुछ इवेंट चाहिए था उस टाइम पे, मतलब किसी ने अगर क्या होता ना तो बहुत सारे बच्चे मतलब अच्छी कंपनी फोड़ सकते थे। मतलब किसी को पता नहीं था कुछ, मतलब ये वाली बात कि डीएसए भी कुछ होता है। एक्चुअली यार हमारे टाइम पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो सोचा कि यार अभी के लोगों को तो पता चलना चाहिए एटलीस्ट। और कार्तिक भैया आपका जो रोड मैप था तो वो तो बहुत सही था, मतलब मुझे तो बहुत सही लगा। कार्तिक भैया ओपी। यस, कार्तिक भैया ओपी। लाइक मुझे गारंटी है कि हमारे जो डिपार्टमेंट के बच्चे हैं ना वो तो बहुत खुश हो गए रहेंगे। मेरे को अभी भी डीएम आ रहे थे कार्तिक की, कार्तिक भैया से बोल रहा ना पीपीटी भेजने को, पीपीटी भेजने। मैंने बोला भाई अरे काम करो ना, सबके नंबर नहीं मेरे पास किसी का, मतलब कभी बातें नहीं हुई तुमसे, मतलब यहाँ से तो की बात हुई तो मतलब कांटेक्ट में रहेंगे व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मतलब यस श्योर वरना ग्रुप वगैरह क्रिएट कर दो। संध्या मैम भी थे शायद मीटिंग में, मैंने देखा हाँ यार उनको। संध्या मैम थे बट मैम ने लेफ्ट कर दिया यार, मुझे भाई, लगा भाई किसी को मौका नहीं किया ना मैंने, डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं, it was amazing. तूने कुछ गलत नहीं बोला। एंड कार्तिक तूने वो जो पीपीटी बनाया था वो खास ये प्रोग्राम के लिए बना था। अरे मतलब थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली, मतलब तूने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, ओह माय गॉड थैंक यू। बहुत सही था। यहाँ पर सेकंड ईयर से कौन कौन है? मैं और सेकंड ईयर यश महाजन और मैं भी सुनना, मतलब मुझे क्या लगता है कि आई थिंक सेकंड ईयर में डीएसए को होगा ना सेकंड ईयर में, या अभी है ना। फंडामेंटल्स हो गए अभी ये चालू है। तो क्या बोल रहा हूँ, मतलब आई थिंक मतलब तुम एकेडमिक्स के लिए भी मतलब एक साल पूरा देने वाले हो डीएसए के लिए, मतलब तुमको 6 मंथ्स के लिए डीएसए रहेगा और सेकंड ईयर में एडीएस रहेगा, एडीएस रहेगा। मतलब आपने उतना भी 6 मंथ भी प्रॉपर किया ना डीएसए और 6 मंथ एडीएस, तो भाई तुम सब बहुत जगह पे फोड़ दोगे। एक ही साल सीनियर से इंस्पिरेशन ले लो, अच्छे पैकेजेस है। ठीक है भाई, मेरा डीएसए में 20 था, मेरा डीएस में 21 था, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ समझा ही नहीं मुझे। और सीरियसली मेरा अभी डीएसए करना स्टार्ट किया मैंने, मतलब देखो मतलब अभी भी कर रहा हूँ मैं, मतलब लेट हुआ मुझे, ठीक है कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप सेकंड ईयर में मतलब, अरे मतलब आपके पास और 2 साल है, मतलब आप बहुत ज़्यादा जा सकते हो आगे। स्पर्श भाई उन्होंने मतलब सेकंड ईयर के एंड तक डीएसए कर दिया और थर्ड ईयर में प्रॉपर डेवलपमेंट बना, कोई भी एक अच्छे से फील्ड कर दिया भाई, कितना गंदा फोड़ेगी बच्चे फोर्थ ईयर में। बट कॉलेज ऑन कैंपस में इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं आते, ऑफ कैंपस ही ट्राई करो ज्यादा। अरे अच्छा, ये एमएल से याद आया कि अपने कॉलेज में एक कंपनी आई इसी साल नई आई है, आईसर्टिस करके, तो दैट कंपनी इज हायरिंग एआई एंड एमएल इंजीनियर्स डायरेक्टली, मतलब अरे यार इंटरव्यूज में भी इतना कुछ नहीं पूछा उन्होंने, एआई एमएल के बारे में तो पूछा ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर भी उनको प्रोफाइल वो मिली है, तो देयर इज वन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस कि, और उसका पैकेज भी क्या अराउंड 8 है, तो इट्स नाइस। और ऐसे बंदे हो गए ना उसमें सिलेक्ट, को देख के रोना था। वो कॉलेज ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स आर अनएक्सपेक्टेड, उसमें कौन कहाँ भी हो जाता है। सच में ऑफ कैंपस करो, मतलब यहाँ पे मतलब कौन वैभव पवार, समीक्षा चिमनकर, वैष्णव कुटुंब, आज सेकंड ईयर में हो ना, तो मतलब आप क्लाउड भी मतलब बहुत जगह कर सकते हैं एक्सप्लोर, क्लाउड है, बिग डेटा है, मतलब बहुत सारी बोस्टिंग फील्ड है भी भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ। बिग डेटा में भी इतना मिल रहा है ना लोगों को, मतलब सैलरी खतरनाक, मतलब ऐसे बंदे देखे जिन्होंने 40+ का उठाया सैलरी बिग डेटा में, क्योंकि मतलब जेटाबाइट में काम करते वाले बंदे, मतलब 100 TB से भी ऊपर, मतलब उस पे काम करते वाले बंदे, मतलब बहुत स्कोप है उस चीज में। क्योंकि देख सीन क्या हो रहा है, मशीन लर्निंग इंजीनियर मशीन डेटा पे काम कर रहे हैं, पर मतलब कुछ लिमिटेशन है मशीन लर्निंग की, क्योंकि मतलब उतने बड़े स्केल पे मतलब मशीन लर्निंग काम नहीं कर पाता भाई, साल लग जाएगा ट्रेन करने के लिए। तो मतलब कुछ ऐसे बंदे जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे मशीन लर्निंग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक ही टाइम पे मतलब क्लस्टर पे मशीन लर्निंग अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब अगर किसी ने वो वाला स्किल मास्टर कर दिया ना भाई, डबल उठाएगा मशीन लर्निंग वाले से वो पैकेज, मतलब वो भी फील करो आप एक्सप्लोर अच्छे से। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हो क्या आप? मतलब देख भाई, अगर सपोज जो मैंने बोला कि मशीन लर्निंग का कुछ तो काम कर, तो बोलेगा भाई ठीक है मेरा डेटा 1 GB में, ठीक है, फिर तेरा बोलेगा भाई मेरा लैपटॉप गर्म हो रहा है, काम नहीं हो रहा, ठीक है, फिर अगर किसी कंपनी में गया तो मतलब अगर अमेजोन में काम करने का है तो वहाँ पे क्लस्टर रहते हैं, डाटा क्लस्टर्स, तो तुझे उस लेवल पे एमएल अप्लाई करना पड़ता है, तो फिर मतलब अगर कोई बंदा उस लेवल पे काम कर रहा है मशीन लर्निंग में, तो मतलब उसके पास बहुत सारा नॉलेज रहेगा कैसे करने चीजें,
मतलब if you focus on the big data part, then also मतलब बहुत scope है उसके अंदर. और क्लाउड से याद आया, अपने पुणे में ही गूगल गूगल हो रहा है, गूगल क्लाउड आ Google रहा आ रहा है. है. मतलब गूगल क्लाउड आ रहा है, तो फिर अभी मैं सोच रही यार चलो क्लाउड करते, सब छोड़ दो सब लोग सर्टिफिकेशन करो. सब मतलब समझा नहीं मुझे पुणे अरे में गूगल गूगल आ रहा है पुणे में. पुणे में बालेवाड़ी में, गूगल तो और गूगल क्लाउड आ रहा है, मतलब एक पार्ट आ रहा है, तो वो वहां पे ऑब्वियसली गूगल क्लाउड इंजीनियर्स हायर होंगे ना, तो फिर दैट इज आल्सो वन अपॉर्चुनिटी, लाइक वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कि अरे भाई मतलब पुणे में जो रह रहे हैं उनके लिए तो घर बैठ के गूगल में काम कर रहा हूँ. माय गॉड. पता है कि मैंने बहुत सारी कंपनी ली, मतलब कंपनी आई थी मेरी चेन्नई पे, मैंने नहीं ली, छोड़ दी मैंने कि भाई पुणे कितना अच्छा है, मतलब घर तो पास पास, खराड़ी पास में, वाकड़ पास में, हिंजवड़ी पास में, तो भाई पहले से बैंगलोर और मुंबई था. कब होने वाला है सेटअप? 2020 के एंड तक हो जाएगा. हाँ 2020 में 22 में हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, साल के एंड तक हो जाएगा, मतलब काम चालू है उनका. हेलो. बिल्डिंग उनकी बन गई है हाई स्ट्रीट के बाजू में ही. हाँ गाइस, एक क्वेश्चन था. स्पर्श दादा, आता समज आपण आता तुम्ही जसा प्लेस झालात कंपनीमध्ये कुठल्या, तर त्याच्यामध्ये जे तुम्हाला रोल्स देतात, टेस्टरचा दिला समज, एकाला डेव्हलपरचा दिला, तर ते कशावरती डिसाइड करतात ते लोक? ते प्रोफाईल आधीच सांगून दिलेलं असतं ना, की जॉब डिस्क्रिप्शन मध्ये लिहून येतं की डेव्हलपर आहे का टेस्टर आहे. मग तुमच्या हिशोबावर आहे द्यायचंय का नाही द्यायचं. आणि अप्लाय करायच्या आधी माहिती मी पण फक्त अप्लाय करून इंटरव्ह्यू नाही दिला असं नका करू, कारण की मग ते ब्लॅकलिस्ट करतात. आपल्या कॉलेजची पॉलिसी आहे, डोंट डू दॅट. नाही करायचं तर मग अप्लायच नका करू. आणि तुम्ही ना असं कंपनीपेक्षा स्किलला फोकस द्या कोणत्या पण. माझे फ्रेंड्स बघितले की सपोज एकाला कॅबजेमध्ये जॉब भेटलाय आणि त्याला काम करायला दिलं एक टेक्नॉलॉजी कोबोल नावाची, त्याच्यावर त्याला काम सांगितलं, ठीक आहे ओके, सगळ्यांना मराठी कळत आय थिंक प्रॉपर. ओके या तर मग त्याला ते बोलले की तुझ्या टेक्नॉलॉजीवर काम कर कोबोलवर, आणि त्याने त्याच्यावर काम केलं 2 वर्ष, ठीक आहे, आणि त्याच्याकडे एक्सपिरियन्स आहे 2 इयर्सचा, पण टेक्नॉलॉजी त्याने जी यूज केली ते तर कोणच यूज करत नाही. आणि झालं असं की मग त्याला त्या गोष्टीवर काम, दुसरी कोणती गोष्टीला काहीच माहित नाही दुसऱ्या त्याशिवाय. मग होतं काय, त्याच्याकडे एक्सपिरियन्स आहे पण त्याच्याकडे कुठलं स्किल नसल्यामुळे तो जॉब मिळत नाही येत आता. सपोज जर तुम्ही कोणतं स्किल मास्टर केलं म्हटलं की मला हे स्किल तुम्हाला त्याच्यामध्ये जॉब द्या, तर सपोज तुम्हाला वाटतं की मला कंपनी वेल पे करत नाही किंवा मला नीट करत नाही, तर तुम्ही मोकळे असता कंपनी सोडायला एनी टाइम. सो इन्स्टेड ऑफ कंपनीचं करिअर फॉलो करण्यापेक्षा तुम्ही काहीतरी असं डेव्हलप करा की तुम्ही कंपनीला तुम्ही सोडू शकता, तुम्ही डिपेंडेंट असता की कंपनी तुम्हाला पेमेंट देते म्हणून तुम्ही काम करताय, तुम्ही त्या मोडमध्ये नसता. सो ठीक आहे, म्हणजे करा, कंपनीचं पण काम करा, पण असं काही ठेवा पॅरलल की तुम्ही त्याच्या जीवावर स्विच करू शकता भरपूर कंपन्या. आणि अजून स्विच करत जायचं एका वर्षाला, स्विच करत जावं, पॅकेज चांगलं भेटतं वाढून. आणि अजून एक गोष्टी आहे की एका कंपनीमध्ये काम करणार तर तेव्हा दुसरे क्लायंट्स असतात. आता फॉर एक्झाम्पल Zorent हॅज अ क्लायंट ऑफ Veritas अँड इव्हन इट हॅज अ क्लायंट ऑफ मायक्रोसॉफ्ट. तो असं नाही की तुम्ही जर Zorent मध्ये काम करता तर फक्त Zorent साठी काम करणार. तर यू मे बी वर्किंग फॉर एनी अदर कंपनी, लाईक नाव आय एम वर्किंग फॉर अ US क्लायंट. तुम्हाला सगळे क्रेडेन्शियल्स वगैरे सगळे त्यांचे दिलेले आहेत, आणि जर तुम्ही काम चांगलं करणार तर तुम्हाला तिथं ते शिफ्ट करून घेतात ऑन साइट कधी कधी. इट्स अ गुड पॅरेंट कंपनी सोडून तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी भेटते. सो सगळे ऍस्पेक्ट कन्सिडर करा बिफोर मेकिंग अ डिसिजन. आणि एक गोष्ट, सपोज मला काम आवडत नाही, खरंच नाही आवडत आहे, तर मग ड्रॅग करू नका, सिरियसली बोलतो. मेंटल लेवल खूप खतरनाक होते. एक फॉर्मॅट मी सेंड केलेला आहे, तर अशा फॉर्मॅट मध्ये आपल्या ग्रुपमध्ये मेसेज येतो, आणि तिथे प्रोफाईल मध्ये मेन्शन केलेलं आहे की कुठल्या याच्यासाठी ही कंपनी हायर करते आणि किती पॅकेज देते. सो समवॉट असा सेम क्रायटेरिया सगळ्या याच्यासाठी पण असतो. पण आता मोस्टली नाव नाही पाठवत ना, नाव आहे पॅकेज पाठवतात ना, एक्झॅक्ट सेम हाच फॉर्मॅट आहे. फक्त आता म्हणजे काही कंपनीसाठी नाही पाठवत, ड्रीम पॅकेज असं काहीतरी ते आहे. एवढं काय सिक्रेट ठेवायचं असतं काय माहिती. मेन गोष्ट, तुम्ही जेव्हा ऑफ कॅम्पसला अप्लाय करसाल ना कधी पण, आणि तुम्हाला सॅलरी मिळते की म्हणतो की 10 लाख सिटीसी मिळते, ओके, तर त्याला विचारा की मला किती मिळणार इन हँड, नाही तर तुम्हाला तो 5 लाख डिरेक्टली विचारायचं की डायरेक्ट म्हणायचं की ठीक आहे, कारण की तुम्ही तो सॅलरी बोलतो त्याच्यात तुम्ही इंटरव्ह्यू त्या लेवल पण तुमचा इंटरव्ह्यू गेलेला आहे, तुम्ही कामाला घेणार तुम्हाला. पण असं होतं की 12 लाख म्हणतो आणि 6 लाख मिळतात हातामध्ये, बाकीचे मग काय असतं, मग ते त्याचा फायदा पण होत नाही. ते CTC डिवाइड बाय 12 इन हँड असणार हे मिथ आहे. सो डोंट डू दॅट. आधी विचारा
ओके. आणि आणि startups- कार्तिक हा बोल ना. हा बोल तू अरे नाही बोल काय नाही. तू नाही मी जस्ट विचारणार होतो की तू कधी सुरू केलं प्रोग्रामिंग स्टार्ट? अरे माझं प्रोग्रामिंग एवढं चांगलं नाहीये, पण जे लागतं ना मशीन लर्निंग साठी ते माझं खूप चांगलं झालंय, खूप चांगलं, काय प्रॉब्लेम नाही. मी सुरू केलं होतं करायला 5 मे 2020 मध्ये. संध्या मॅमच्या लॅब मध्ये केलं होतं त्यांनी सुरू मिनी प्रोजेक्टच्या वेळेस. आणि Second मशीन year. लर्निंग कधी स्टार्ट केलं मग? अरे मी 5 मेला सुरू केलं प्रॉपर, मला डेट पण आठवते. 5 मेला सुरू केलं मी 2020 मध्ये. लॉकडाऊन झालं ना त्यावेळेस. पहिले 2 महिने पहिले कार्तिक, हा ती इंस्टाग्राम वरती जी स्टोरी टाकली होती, हा सांग ती काय होती तुझी ती स्टोरी? अरे सांगतो तुला फोन करून, फॅमिली वगैरे इकडे राहिलं. तर मी काय प्रॉपर तुम्ही आहे ना आयफोन तुम्ही करा मी नाही का, फोकस करा मशीन तर खूप, कारण डिमांड खूप आहे त्याच्यामध्ये. आता यूज केस पण खूप आहेत नाही का? आजकाल सगळेच आयफोन घेत आहेत. आमच्या बॅच मधले स्पेसिफिकली. आणि ते फोनवरती सांगू तुला काय असते ते. आयफोन वगैरे काय नाही घेतलं. 10,000चा फोन तोच काम करतो. हवं DSLR घ्या, प्रॉपर DSLR घ्या, प्रॉपर फोटो काढा. ते फिल्टर वगैरे लावून काही फार नाही त्याला. आणि अजून एक विचारायचं होतं असं की जे असे मास्टर्स वगैरे यासाठी टार्गेट करतायत, तर त्यांच्यासाठी प्लेसमेंट मधून असं काय म्हणजे मेजर गिव्ह असेल की काय प्रिपेअर करावं? फक्त एक मिनिट. मास्टर साठी ट्राय करताय तर मग प्लेसमेंट मध्ये चुकून पण नका सांगू. हा नाहीतर हा मग तन्मय इज द राईट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस. मास्टरसाठी मी सर्च केलं 2 वर्ष. मी सांगतो फक्त रियालिटी काय. हे बघ, तुमच्याकडे 3 ऑप्शन आहेत, 4 ऑप्शन आहेत तुमच्याकडे. एक तर तुम्ही US जाऊ शकता, बरोबर. US किंवा UK किंवा जर्मनी आणि बाकीचे युरोपियन कंट्रीज. तर फायदा काय, सपोज तुम्ही US ला गेला, तुमच्याकडे कमीत कमी 60 लाख तर पाहिजेत मास्टरसाठी. ठीक आहे. आणि स्कॉलरशिप वगैरे म्हणतात, पण माहित नाही किती स्कॉलरशिप मिळते. सेकंड ऑप्शन आयर्लंड चांगला आहे. परत आय थिंक आयर्लंडला आणि आय थिंक ऑस्ट्रिया, इटली आणि जर्मनी आय थिंक इकडे काहीच फी नाही. म्हणजे तुम्ही 20 लाखामध्ये मास्टर होऊ शकता टॉपच्या कॉलेजमध्ये. सपोज तुम्ही जर गेट वगैरे प्रॉपर, सपोज तुम्ही गेटला जर क्वालिफाय झाला तर तुम्ही TUM ला क्रॅक करू शकता. जर्मनीमधल्या जे बेस्ट कॉलेज आहे मास्टरसाठी युरोपमधलं. आणि आय थिंक काहीतरी 100च्या आतमध्ये अख्ख्या वर्ल्ड रँकमध्ये. आणि तिकडे तुम्हाला फक्त तिकडे तुम्हाला इयरची फी आहे ₹12,000. तो मास्टर होतोय कमीत कमी 1 लाखापासून मास्टर होतं. आणि जो खर्च आहे तो सगळा खर्च असेल, राहायचा काय खर्च असेल तो एज्युकेशन फ्री आहे. सपोज तुम्हाला हवं आहे की मला मोठ्या कंपन्या काय करायच्यात म्हणजे गुगल वगैरे, तर मग स्टॅनफोर्ड वगैरे आहे, पण मला माहित नाही ते प्रत्येकाला मिळेल का नाही किंवा परत आणि स्टॅनफोर्ड मध्ये जाणारे ऑलरेडी हुशार असतात यार, म्हणून ते जातात. हा तेच. आणि असं किंवा जॉर्जिया वगैरे पण जॉर्जिया टेक आहे, परत ते ASU वगैरे तिकडे पण मिळतं. हा, जॉर्जिया टेक इज गुड. नॉर्थ ईस्टर्न आहे, व्हर्जिनिया वाली, फ्लोरिडा युनिव्हर्सिटी आहे. बर्कली वगैरे विषयच नाही आपला. फीस पण खूप असते त्यामुळे. पण आय थिंक खूप सारे कॉलेज काय ते कॉलेज आयर्लंड मध्ये डब्ल्यूचे वगैरे कॉलेज ते पण भारी करतात एज्युकेशन प्रोव्हाइड. अपग्रेडचा एक्सक्लुझिव्ह कोर्स करा तुम्ही, नाही तर ऍड बघितली आहे ना, लंडन में जाएगा बस. एक्सक्लुझिव्ह कोर्स. कार्तिक, मला एक जस्ट क्वेश्चन होता की आपण जे मशीन एक मिनिट लर्निंग प्रथमेश, एक मिनिट थांब. त्याच्या आधी मला हे विचारायचंय, तुझा एकच प्रश्न कधी संपणार आहे? मागच्या 10 प्रश्नांपासून म्हणतोय मला एकच प्रश्न होता. आता फायनल एक का सांगून ते. कार्तिक, तुला ना हा प्रथमेश खूप परेशान करणार आहे आता. नाऊ ऑनवर्ड्स अंटिल हिज प्लेसमेंट. मी आता नाही ऍक्च्युअली, मी आता स्विच केले. म्हणजे मी आता क्लाउड बिगडेटा काम करतो आता ह्या मोमेंटला. म्हणजे माझा आता मोठो काय की आता मशीन लर्निंग प्रॉपर झालाय आपल्याला, तर बिगडेटा मास्टर करून मोठ्या स्किलवर काम करायचं. बाय द वे, मला आज हे आलं, ऑफर लेटर आलं झोरियनचं. अच्छा, नाईस. आज मला खूप जणांचं हे आलं होतं लिंक्डइन वर, कधी येणार आमचं, कधी येणार. म्हटलं मी HR नाहीये, आय कॅनॉट से दॅट. तुमच्या बॅच मधले कोण कोण झालं होतं रे? निखिल, तू, मला 2च माहित आहेत. आणि वैभव झाला होता. वैभव शिंदे आता एक ना, म्हणजे आमच्या एक क्लासमधला मुलगा वैभव शिंदे नावाचा. तो म्हणजे इतका एक्स्ट्रीम डेव्हलपर आहे ना, म्हणजे त्याला काही कोणाशी बोलला वगैरे नाही, पण म्हणजे मला तर वाटतं त्याच्या कॉलेजमध्ये कोण असेल त्याच्या लेवलचा, सिरियसली. म्हणजे आय थिंक स्पष्टला पण माहिती असेल. आपण आता स्टार्टअप मध्ये काम करतोय तो. त्याने झोरियंट सोडून दिली. आय थिंक त्यांनी जॉईनच नाही केलं झोरियंट. हा, त्यांनी इंटरव्ह्यू वगैरे दिला सोडून पडला. मला स्टार्टअपची ऑफर आली आणि स्टार्टअपचा चांगला चालू मस्तपैकी, डिझाईन वगैरे प्रॉपर. आणि तुमच्या बॅच मध्ये असं लाईक आउटस्टँडिंग पॅकेज कोणाला भेटला आणि प्रोफाईल? अविकेत, वेरिटास. ओके. वेरिटास पेक्षा हायेस्ट नव्हता आमच्या बॅच मध्ये.
अच्छा व्हेरिटास म्हणजे testing वाली? 10.4 हा टेस्टिंग मध्ये येस टेस्टिंग वाली हा ओके डेव्हलपरला किती मिळते अभिकेतला आणि ह्याला पण भेटलेलं ना स्प्रिंकल रिदम 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 त्याला पण हा. भेटलेलं ना हा 3 जण होते आम्ही स्प्रिंकल रिदम आणि अभिकेत आणि सागर पण झाले आता ऑफ कॅम्पस मधून सागर बोरले कुठे व्हेरिटासलाच अच्छा व्हेरिटासला ओके ओके अरे वा ऑफ कॅम्पस सही आहे ऑफ कॅम्पस मध्ये तो लास्ट राऊंड पर्यंत गेला होता पण हा. समजा आता 10 जण गेले होते लास्ट राऊंडला आणि जे जण जॉईन झाले त्यांनी कोणीतरी सोडून दिलं मग त्यांना परत इंटरव्ह्यू बोलवलं आणि नाईस 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 पण तेच ना आम्ही जेव्हा पण आता कॉलेजला जातो एलसी वगैरे किंवा मार्कशीट वगैरे घ्यायला तर सगळे हेच म्हणतात की तुमच्या ज्युनियरला एवढे चांगले ऑफर भेटतात आणि तुमच्या वेळेस मॅक्झिमम हे होतं व्हेरिटास कोविड आला यार तुमच्या वेळेस आणि तेव्हा मेजर हे होतं सिरियसनेस हा आता नंतर कसं आता उलट बूम झाली इंडस्ट्री बिकॉज की एव्हरीथिंग बिकेम ऑनलाईन ऑनलाईन तर आता एकदमच बूम झाली लाईक आधी जेवढे नव्हते ना ऑफर्स म्हणजे जागा तेवढं आता जास्त झालेत खूप झालेत एक्स्ट्रीम मला एक प्रथमेशच्या भाषेत एक प्रश्न होता मला स्पर्श साठी की स्पर्श तू मास्टर साठी प्लॅन नाही करते का नाही सध्या नाही आय एम एन्जॉईंग द वर्क म्हणजे इथं खूप चांगलं कल्चर आहे आणि फ्रंट एंड बॅक एंड दोन्ही वरती काम भेटतंय तो फुल स्टॅक एक्सपिरियन्स भेटतोय गुड ओके सो युअर प्लॅन म्हणजे तुझा काय प्लॅन आहे लाईक इन द 5 years नेक्स्ट 5 years व्हॉट यू वॉन्ट टू डू की जॉबच करणार आहे नाही विचार केला मी जे गोइंग विथ द फ्लो आणि अजून एक असं होतं की आम्हाला तू एक आयडिया देऊ शकतो का इव्हन कार्तिक आणि तू स्पेशली स्पर्श तू कारण की तू आता त्या कंपनीमध्ये म्हणजे त्या कंपनीमध्ये जी कॉलेज थ्रू भेटलेली आहे त्या कंपनीमध्ये कुठल्या टेक्नॉलॉजीज वरती जास्त काम केलं जातं टेक्नॉलॉजीज ॲज इन लँग्वेज जसं आम्हाला वाटतं जावा येस सो देर आर 2 पाथवेज एक असतो जावा आणि एक असतो फ्रंट एंड तो जावा मध्ये स्प्रिंग हायबरनेट स्प्रिंग बूट आणि कोर जावा तर असतोच आणि फ्रंट एंड मध्ये रिॲक्ट अँग्युलर आणि त्याचा बॅक एंड यू कॅन इदर डू इट इन पायथन ऑर यू कॅन डू इट इन गो ऑर एनी अदर पर्टिक्युलर लँग्वेज